everyone, welcome to this Twitter space. So Vishal needs no introduction, right? We have him today for this space, and I'm sure that any person who is trading the Indian markets knows Vishal, right? And if you are one of them who doesn't know him, then probably after listening to this space, you won't be one who doesn't know him, then, right? And for the sake of completeness, right, I'll give a quick introduction about Vishal and my co-host as well, right, Destin Musk. So Vishal is a CMT. He can be seen widely promoting systematic trading as of now. I mean, lately I've seen umpteen videos of him promoting systematic trading and trading concepts, right, both online through his YouTube channel and his Twitter handle, and offline as well through different webinars, right, that he keeps on doing with offline workshops. His introduction to the markets, I think, began from his own family. His father was a broker, if I'm not mistaken, and his journey is already public on various YouTube platforms, right? Sorry, Vishal. Yeah. No, Go ahead. that is correct. Yes. Go ahead. Yeah. And his journey, I think it's already public on various YouTube channels. I think Nitish hosted a podcast with him, and then, if I'm not wrong, Vivek also posted a podcast with him where Vishal has told about his journey, right? So welcome Vishal to this space, and thanks for agreeing to this and taking out of your time out of your schedule, right? Thanks Yeah, for. pleasure all mine. Pleasure all mine, honest. Perfect. Okay, and a quick introduction about my co-host. So, Destin Musk, he's the brain behind Wealth Compounders that we have right now. He's an independent trader. He passed out from IIT KGP around 20 years back. He's a CFA as well. He worked with Futures First, and he has been trading for around past 15 years. Right. So I welcome everyone to this space. Right. Yeah, and thanks, guys. right. And this space, I think we are trying to do it a bit differently. Probably we'll start about talking about like who Vishal is, like what Vishal does during the non-trading time, right? What he does, how he spends his time. Then probably we'll move on to some interesting topics about like how do we inculcate risk management and how does trading psychology plays in the trading world. And I think that's where most traders struggle a lot, right? We have so many trading strategies, but I think the main differentiator here is the risk management and the trading psychology. And last, we'll probably start, we'll have a Q&A session with Vishal for any trading queries that you guys have. Okay, Awesome. then, yeah, let's begin. Right, so Vishal, first question, I'll direct it to your way, right? If you weren't a trader right now, where or what would Vishal Mehta be doing right now? That's an interesting one. I think so. I had like three career options when I was actually making a decision of where I want to make a career out of it. So I still remember one night, when I had to really make a decision where I want to move my career. So I had sitting at around 2 o'clock in the night. I had all my Bombay Stock Exchange certificates or the stock market related certificate at one place. Then I had few of the certificates that I've done for the sound engineering. I always wanted to be like a DJ mixing music and something of that sort. And third, I had put out a lot of cricketing as well. So I put out my cricket certificates and every that I still remember that night somebody told me like if you really want to make a career out of it, just write down what you are good at and what you are not good at it and what are the advantages and disadvantages. So maybe if I would not have been a trader, maybe a DJ or maybe a cricketer. Cricketer very less likely, but definitely a good DJ, I would say so. Yeah. So you selected a boring option, did you? Who says trading is boring? Trust me. if, if anybody says trading, yes, it is boring to a certain level, but once you really get into that zone level or what you call as a Zen level, it is supposed to be boring, but I know it's all bookish knowledge. Yeah. कितना भी बोल लो आप, trading is as exciting as it can get, right? Because every day is a Uh, new day, and there are a lot of new challenges to keep you up to date of what's happening with the market. So I don't think so. It's at all boring. yeah. And I think आपने बोला कि क्रिकेटर तो जैसे क्रिकेट की जिंदगी होती है ना कि अगले दिन बैटिंग करने जाओ 0 पे आउट हो रहा है या 100 बना रहा है आदमी यू डोंट नो राइट तो मे बी योर क्रिकेटर इज आल्सो हियर सो यू एवरी टाइम यू गो ऑन मंडे मॉर्निंग और एनी डे आपको फ्रेश डे शुरू करना है राइट एंड दैट्स व्हाट क्रिकेटर लाइफ इज आल्सो अबाउट एवरी डे इज अ न्यू So डे true. Every day is a new day. So true.
And probably Vishal, I mean, we might have been seeing you. I mean, we might have seen you in Goa, right? Probably playing some DJ in Thalassa, probably if you were not here. Maybe I think that maybe it's, with the yeah. with the Bali in my ears and like whatnot. Yeah. Okay, thanks. This was an interesting answer, Vishal. Thanks. Next question, Thank probably I'll quickly jump onto the next one, right? So when you're not crunching the stock market, I mean, with the stock market numbers, I mean, I'm sure you do so much you. back test, right, along with your team. Where can actually Vishal Mehta be found, right? Any hobby, any favorite pastime that you have? So actually, my hobby is reading a lot of books, but lately it is not there. But one thing that I try not to miss it is a Sunday cricket with my building buddies. Like, I like make sure even for yesterday, like I flew down from Delhi just to play cricket today. But my mom was coming from US. I had to go and pick her up. But that is the only place that you would find me. Most of the time I keep on traveling a lot. I like to meet a lot of people because there is two ways you can get your learnings from, and I'm a more of a person who likes to learn from people. So either I read a lot of books or either I go and meet a lot of people. And trust me, like from my first job, which was a spider software, I used to meet at least two or three traders every day. एंड दैट केप्ट मी ऑन द हुक. वो मुझे हमेशा सिखाता था कि एक ट्रेडर के पास जाऊंगा तो वो बॉलिंगर बैंड के बारे में कुछ पूछता है, इसी ट्रेडर के पास जाऊंगा तो he'll talk about MACD. If I go to some other trader, he'll talk about Elliott wave. If I go to some other trader, he'll talk about fundamental technical mixture. So I'm just passionate about market. So I don't think so you may find me anywhere else besides Sunday cricket. I think so just meeting new people, going traveling and meeting traders again. Right. Okay, I think that's interesting. And I remember, I think you mentioned somewhere that you met Rakesh Jhunjhunwala as well while you were, I mean, you were in some job, right, earlier. Yes, so I I think you used were to work managing. with Bloomberg. Yes, so when I used to work with Bloomberg, I used to manage the rare enterprises. So whenever he has to have some queries, I had to go there and kind of resolve his queries about Bloomberg terminals. Wow, I'm sure. I mean, not many people know about this, Vichal. Thank you. Okay, I think next question probably I'll ask is I remember, I think you were talking sometimes back. I think it was on Nitish's podcast that you were chasing a Maruti car when you just started trading, and you had I mean, you saw unrealized MTM profit on your screen. So that was during Right. that time. Right now, are you chasing any materialistic thing as of now? Any special, the last I mean, the latest one that you Yeah. want to? Yeah, so interesting one, like that Maruti fiasco, because just for the people who didn't know about it, like when I started out my career, when I bought some some quantities of UCO Bank, and that 10 rupees became like 20, 25, 30 rupees, and I was making some 3.5 lakh for a 22-year-old guy back in 2002, 2004. It was like a decent amount, I would say. So, and I was like, somebody asked me कि भाई इतना पैसा मिल रहा है तो बुक कर ले और घर लेके जाए. बोला इससे तो मुझे हाई एंड मारुति कार खरीदनी है. बट द फनी थिंग इज that is the day and today I don't have a car. I don't prefer to have a car, to be honest. And people kind of, I would travel the world, so I will keep on going to US. I went to London, I went to Hong Kong and everything. So for me, traveling is more meeting new people, learning new cultures. It's not a materialistic thing, I would say. So I would just want to travel whatever I can, in like whatever the money that I get saved or make money out of the trading or even doing other activities, I would try to go and explore the world. Okay, that is where I've learned so much. Like my perception about the world really changed when I started visiting different countries. Okay, Vishal. I think I recently saw your Philippines posts as well. I think that was very nice. Vietnam or Philippines, if I'm not sure. Yeah. Vietnam, Okay. yes. Okay. Yeah. 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 All right. So, do you have those bucket lists? I mean, I need to. I mean, visit these much countries by this time, or So not as of I now. don't know about the timings, but I'm pretty sure that New Zealand, I need to do it as soon as possible. Switzerland is on the card, and maybe Africa safari is something that is left with. In the continent wise, I would say I would really want to explore New Zealand first. Okay. Perfect. Hopefully that happens soon, Vishal. It will be. It will be. Perfect. Yeah. All right. So, Vishal, I mean, one weird response that you got when you introduced yourself as a trader to someone. I mean, just and you said that, oh no. Sorry, come again. So Understood it? What is it? one weird response when you introduce yourself as a trader to someone, that I'm a trader. Oh.
Oh, that's an interesting question. Yeah. Actually, I've never found any, kind of reaction per se. I don't recollect anyone like, saying that, oh, you're a trader or something. Maybe, but I can tell you that being a trader has had its own advantages. Like, मुझे अभी भी याद है कि there are certain people who, I don't know why, but for whatever reasons, kept into their own shells and never opened up. And I'm kind of a person who really want to talk about markets day in, day out to everyone. But then when the COVID hit, or maybe the cryptocurrency boom came, lot of people who are not just talking to me, they really approach me to understand what's happening with the cryptocurrency market, or maybe during the COVID period, because that was the only business that was running, and they feel like a FOMO, fear of missing out, and then reached out to me, hey Vishal, you're a trader, why don't you tell us what to buy, what to sell, or maybe teach us. So that was it has its own advantages and disadvantages, but yeah, I think so. No weird reaction, but yeah, it's good to be called as a trader. I think so. Gone are those days when people were afraid to tell themselves as a trader. I think so. Yeah. The time has really changed, and in fact, when I was in US recently, we have coined this term called as pro-tail. So every time you have a professionals or you have retails, but there was this, either you are a full-time trader or either you are a retail trader who is just burning on losing a lot of money. But then this term has been very widely used in US called as pro-tail, means professional retail. And that really kind of stuck a bell with me, like we are a professional but we are still retail, right? Yeah. So विशाल, did किसी ने ऐसे आके नहीं बोला क्या सट्टा लगाते हो क्या? uh, Honestly नहीं, but it's Hmm. Hmm. how you kind of present yourself. वो मेरे लिए Yeah. बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी मैं किसी को मिलता हूँ Hmm. तो मेरा अप्रोच बहुत ही सिस्टमेटिक कॉन्वर्सेशन से होता है, बिकॉज दे नेवर लुक्ड एट मी और दे नेवर टॉक टू मी दैट यू तो तू सट्टा ही करता है. Hmm. मे बी इट इज हाउ आई क्रिएटेड द इम्प्रेशन. आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट, बट इट्स जस्ट दैट मैंने कभी भी वो इम्प्रेशन आने नहीं दी कि भाई हम लोग सट्टा करते हैं. वी आर अ प्रोफेशनल्स Correct. इन दिस बिजनेस एंड डूइंग द Mm-hmm. प्रोफेशनल वर्क लाइक यू डू एट योर होम सर्विसेज और इन योर बिजनेसेस. इट्स अप टू अस हाउ वी रिप्रेजेंट आवर सेल्फ. क्योंकि मुझे पता है मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त भी है, ऐसे नहीं बोलूंगा कि सभी लोग, पर कुछ अच्छे ऐसे दोस्त भी है जो इसको सट्टे की तरह दिखाते हैं. Like Right. you really represent them like a gambling or a casino and everything, although there is a lot of synonyms between gambling and trading. But there are tables that you have to talk about it, so we'll in due course we'll discuss about that. But अभी तक किसी Right. ने ऐसा नहीं बोला कि तू विशल तू सट्टा करता है. आई Yeah. थिंक No, मैं that's a good इसमें answer. Yeah. मैं इसमें अभी मेरा पर्सनल एक वो है. फॉर एग्जांपल मैंने अपनी वाइफ को ये चीज बोला कि मैं तो ये ऐसे ऐसे आई स्टार्ट, मतलब शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट द मार्केट्स, राइट. तो मैंने उसको बोला, तो उसका सीधा ये था, ये तो गैम्बलिंग है, ये कब तक चलेगा. आई थिंक दैट परसेप्शन, दैट आई मीन इसकी लॉन्जेविटी क्या है, राइट, कब तक आप सस्टेन कर सकते हो इसके अंदर. आई थिंक दैट इज द माइंडसेट दैट पीपल हैव Correct. कि And ट्रेडिंग में आप whoever सर्वाइव. joins, yeah, honestly, whoever joins, right, first, उसको ऐसे ही लगता है कि, and that's where I think Vishal said appropriately कि आप उसकी expectation क्या set कर रहे हो. आप उसको बोलो एक का 10 बना रहे हैं हम लोग, right, तो probably उसको ऐसा लगेगा. लेकिन अगर उसको बोलेंगे systematic है कि इसको कैसे long term कर सकते हो, I think that kind of answer will convince that, and it will bring more people into trading. Right now, many people are afraid because of their parents or whatever, right? They call it in an old language कि भाई तुम तो क्या कर रहे हो. But for people like Vishal, I think you guys can easily make it a profession for a lot of people. And So thanks for so that. that was very interesting क्योंकि मैं बहुत सारी conferences में जाता हूँ. Mm-hmm. And not to be honest, don't want to stereotype or anything, but things have really changed. Like when you Yeah. come to a Gujarati family or a Marwadi family, trading is supposed to be like, even my father for that matter actually encouraged me to get Mm. into the market. Even he encouraged my wife. She was doing a job and she said, ये job वो क्या कर रही है, stock market में चली जा. And I was like, which parent or in-laws tell their daughter-in-law to join trading? Which if you go to South India side where they think this is little risky business, get an Yeah. IT job, that's a consistent, but that also prototype has been changing. And in fact, it is changing for a good, because I have seen like quite a few people whom I look up to is are from South. Mm-hmm. Kirubakar and Madan Kumar, these are all good friends of mine, and I look up to them. And good that they have chosen this as a profession. Right.
And I think you named Kiru and Kiruba Karan and Madan, right? I think they have been promoting trading as well, right? The right way. That's what you The said, right right? way. Yeah, The yeah. right way, I think that yes. is very important. Yeah. Okay, thanks, Vishal. I think this was an interesting one. एक और मैं आपसे एक सवाल पूछना था. So, sorry guys, we are just going some informal trading की talks. We'll talk about probably another 10 minutes. Vishal, आपका any trading person that you have been inspired by the most, right? Can be a current trader, can be a person in the past, right, who was there. So the most you have been inspired by, and why probably. So I think so the first major inspiration I got was एडवर्ड साइकोटा. अगर आपने किसी ने ये बुक नहीं पढ़ी तो हाईली 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 रिकमेंड. मार्केट विजार्ड बाय जैक श्वेगर. उसके अंदर एक चैप्टर है एडवर्ड साइकोटा. ओके. एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज एवरीबडी गेट्स व्हाट दे वांट फ्रॉम द मार्केट. एंड आई वाज लाइक, मैं जब भी वो बुक पढ़ रहा था, and that was my original seeding of systematic trader. Okay. Edward Saikota, way back in 1980s, when they did not have computer supercomputers, बड़े बड़े मशीन मेन फ्रेम्स में पंच कार्ड की मदद से he has developed a system, and he followed the system to the T. Okay. कि इतना मतलब डिसिप्लिन ट्रेडर की अगर आप जर्नी पढ़ते हो तो आप इतना इंस्पिरेशन लेते हो जिसका कोई हिसाब नहीं है. And interestingly, he made some, like, 1100% return on its trend following system. And उसकी स्टोरी आफ्टर स्टोरी आफ्टर स्टोरी अगर आप उस एडवर्ड साइकोटा की पढ़ोगे ना, तो यू विल बी जैप्ड. आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. ओके. ही शेयर्ड टू एग्जांपल्स व्हिच रियली रेजोनेटेड विद मी. एक बार वो जो टाइटल ऑफ द बुक है, एवरीबडी गेट्स व्हाट दे वांट फ्रॉम द मार्केट, तो ऑथर ने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय दैट. तो he said कि बॉस, मार्केट में ना सब लोग पैसा बनाने नहीं आते. तो ऑथर पूछता है भाई तो किसके लिए आते हैं. आई थिंक सो एवरी वन ऑफ अस कम्स टू मेक मनी इन द मार्केट, पीरियड. नो. एंड एडवर्ड साइकोटा सेज नो, नॉट एवरीबडी कम्स टू मेक मनी इन द मार्केट. से गिव मी एन एग्जांपल. तो एडवर्ड साइकोटा बोलता है कि भाई मेरी एक ट्रेडिंग डेस्क में एक बंदा है. ही इज फार मोर बेटर ट्रेडर देन आई कैन एवर इमेजिन. ओके. एंड आई कैन एवर बी. उसके जैसा ट्रेडर मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा. लेकिन उसकी एक पैटर्न है. एंड व्हाट डू यू मीन बाय दैट पैटर्न. तो उससे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय दैट पैटर्न. ठीक है. इन द फर्स्ट 15 days ही विल ट्रेड लाइक मशीन. मतलब शायद मैं कुछ मेरे रूल्स फॉलो ना कर पाऊं, लेकिन ही विल फॉलो हिज सिस्टम टू द एक लेवल तक करेगा जिसका मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ. और वो बहुत पैसा बनाता है. लेकिन जैसे उसका पैसा बन जाता है ना, ही लूज इट ऑल बैक अगेन. ही स्टार्ट डूइंग reckless trading. And he did it not one time, not two time. He kept on doing it. And then he realized कि जब भी वो पैसा बनाता था उसको इतनी खुशी नहीं होती थी. And he think he does not deserve that money, and he will, he likes sympathy from people. Maybe he was going through some family distraction or whatever. And he actually will lose everything back again to the market, and will go and take the sympathy from the traders, saying that अरे यार तू तो इतना अच्छा ट्रेडर है, इतना पैसा बना लिया और कैसे तोड़ दिया. नहीं नहीं चल, डोंट वरी, नेक्स्ट मंथ तू वापस बना लेगा. एंड द रियल क्रक्स वाज ही वाज नॉट देयर टू मेक मनी. ही वाज देयर टू गेट सिंपैथी फ्रॉम द मार्केट और फ्रॉम द अदर पीपल अराउंड हिम. एंड आई सेड बॉस, इसमें मुझे ट्रेनिंग मतलब मेरे लिए क्या है कि देन आई रियलाइज कि बॉस, व्हाट इज माय रीजन, व्हाट इज माय व्हाई टू कम टू द मार्केट. एंड दैट रियली काइंड ऑफ ओपनड अप माय विजन कि अपना ट्रेडिंग में व्हाई बड़ा क्लियर होना चाहिए कि भाई ट्रेडिंग कर क्यों रहा हूं. तो मेरे लिए तो वो एक आई ओपनर एग्जाम्पल था. और दूसरा उसने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिया. टिल डेट दैट इज माय फेवरेट सिस्टम. ही सेज कि मार्केट में ट्रेंड फॉलोइंग में पैसा बनता है. एंड विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग. अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, डस्टिन मार्क्स ऑनर्स ट्रेडर्स, अगर आपको एक बोलना है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग क्या हो सकता है, कैन यू गेस. बाय लो सेल हाई. बाय लो सेल हाई. इट्स अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग और मीन रिवर्जन. आई थिंक मैं सो. तो ऑनेस्ट ट्रेडर. या मैं तो बोलूंगा कि इंडेक्स बाय कर लो. हाँ सही बात है. विच इज ऑल्सो राइट बाय द वे. बट आई थिंक हाँ. सो ही सेड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग इज बाइंग एन ऑल टाइम हाई. आपके पास अगर 4,000 स्टॉक है, अगर कोई चीज अपने में ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, दैट मीन्स ये घोड़ा तेजी का है. ये 4,000 घोड़े दौड़ रहे हैं एवरी डे. ठीक है.
ये 4,000 में से ये जो 10 घोड़े या 20 घोड़े जो अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है ना, they are the ones which you should put your bets on, because they are doing something that is not been done by other horses. So in that way, it really struck with me, because when I bought, and this is a story that was really true, not making up stuff, but I invested in a company called 25, like Jacob. I had invested about 25,000 rupees. It actually went as high as 12.5 lakh rupee. Okay, although I could not sell everything off, जब भी वो नीचे लोअर सर्किट में चालू किया था, I barely get out of that about 7.5 lakh. But the point was, 25,000 से जो मेरे 12 लाख बने ना, हर बार वो ऑल टाइम हाई बना के बने थे. Right. So that really changed my perspective about the market. So the first trader that I really looked up to in the early part of my career was Edward Saikota. Shubhadeep Nandi also from Kolkata really gave me a basic grounding work of systematic trader. Then Larry Connors with his mean diversion trading system. But my real psychology change came when I attended a workshop by Madan Kumar, and that completely changed me as a trader, in terms of how should I look at my performance and what is the problem with my system or with me. So if you have some time, I can explain what really changed for me. Can I go ahead? Yeah, sure, Yeah. Vishal. Yeah. Sure. तो बेसिकली हम लोग मार्केट में, मैंने देखा कि भाई मेरा पैसा बन रहा है, मेरा पैसा टूट रहा है, बट मैं कंसिस्टेंटली पैसा कभी भी नहीं बना पा रहा हूँ. So, that was my beginning of the journey. And then all of a sudden, I attended this workshop by Madan, and he was running this concept of buying options. वहां पे वो 3 लाख रुपए को he was compounding it aggressively, और उसने तब तक 30 लाख कर दिए थे. Like anybody, I was like very curious. अरे 3 लाख का 30 लाख, how did it happen and all that stuff. And I attended workshop, and I went and I was sitting at the last table, and I still remember very clearly in my eyes. So he showed us some random system. Okay, he showed us some random system जहाँ पे उसका पूरा का पूरा डेली का पीएनएल रिटर्न था इन एन एक्सेल शीट. और डेली का पीएनएल था, तो द नंबर्स वर वेरी वेरी स्मॉल, सो आई कुड नॉट सी, बट ही मार्क देम एज रेड एंड ग्रीन. कि जब भी लॉस हुआ है तो रेड डे है. जैसे आप जीरोदा या कोई भी ले लेते तो उसमें अपने को ऊपर चार्ट में दिखा था, राइट, रेड डेज एंड ग्रीन डेज, राइट. Yeah. Yeah, you make money or not money. So that were the kind of an Excel sheet which was completely red, few greens here and there. And he asked us, Okay. would you trade this system? And a unanimous answer for every one of us was no. Then he clicked one more time. So daily turned into weekly. कुछ भी ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं होते थे. दैट वाज अ वीकली रिटर्न्स कि वीक में कितने बने. तो वहां पे भी पूछा कि भाई विल यू ट्रेड दिस सिस्टम? आंसर वाज यूनानिमस नो. देन ही क्लिक्ड वन मोर टाइम. इट टर्न इनटू मंथली चार्ट. थोड़े चेंजेस हुए, थोड़े रेड जो थे वो ग्रीन में कन्वर्ट हुए. And then he asked us, okay, would you trade this system? 50% of the audience were like, yeah, maybe, but it is still a lot of red months. And then he clicked one more time. Monthly turn into quarterly. The scenario changed. All of a sudden, 60% of them were green and 40% were red. Would you trade this system? And now the audience was 70%. And then he clicked one more time. It turned into yearly chart, the performance of various years. And he never lost money in the year. And that really just blew me away. That why I was not making money. Because I was not making money because I was jumping the system, jumping gurus, jumping jo bhi bolo, jumping instrument, jumping style, everything. I was not sticking to something that I wanted to do. So that was a major turning point for my career, where I always give credit to Madan for helping with that one slide. और बहुत लोग है ना, आई स्टिल सी इन सोशल मीडिया कि कोई भी टीचिंग करता है ना तो इट इज शोन एज अ वेरी बैड प्रोफेशन. बट आई टेक अ प्राइड दैट आई एम अ ट्रेनर. If I could help any one trader, I'm okay with 99 giving me galis. But even if that one trader, which like me, I got it influenced by that, and my profitable trading journey just went skyrocket. So just don't take what everybody says, कि everybody's fraud. Yeah, maybe 90% of them are fraud, but at least 10% जो genuine है उसके चक्कर में आप वो miss out ना कर सको. So that for me was a ultimate game changer. Law of large number. He used to have this slide called as law of large numbers, and I keep on using that slide with his permission in every slide and give due credit to him.
So I mean, the law of large numbers, right? That you talk about. I think I haven't attended Madan's workshop as of now, but Madan has a YouTube channel. If I'm not sure if everyone knows, I think he has very few subscribers, and he hasn't. I mean, he's not been maintaining that YouTube channel. But I think he has two videos there on trading psychology, right? I think that's a 2 hour video Yes. that is. And to be honest, right? I mean, I every quarter without any miss, right, I go and revisit those videos just to keep my sanity of the I mean, during the trading times, right? So he has beautifully explained the law of large numbers, and you should not be looking at the daily PNL. Zoom out your PNL, look at the monthly, look at the quarterly, look at the 6 monthly, and then look at the yearly, and that's how you should decide your trading performance, right? So, but And easier said than done, honest trader. oh, that is true. I mean, that is true. So that's why I said it. Every quarter I visit his YouTube. I mean, probably everyone should go and see his YouTube videos there, right? I think it goes by the name of Trading Psychology. I think that's the title of the Yeah. of his videos. So Vishal, Mm, very good talk there. One question I had in mind. So when we say leaders are born and they are not, they cannot be made. What do you think mm, about traders? So, अगर मतलब trader कोई अपनी can you teach someone who is not, I am in quotes, right, not qualified to mm. be a trader, but now someone you go and teaches, can you make someone a trader, or he's just born a trader? I think so. That was the same question and argument Dennis Ritchie and Bill Eckhart Okay. had, right? When they started Mm-hmm. out, the famous experiment of the turtle trading. And Bill Mm-hmm. Eckhart was traders are born, and Dennis Yeah. Richard was of the opinion, no, you can make it. I believe, it's a mixed answer. Okay, traders are born and can also be taught. Both. Okay. Okay, there are some exceptional traders that I've met in my life. Okay, but they are a very Yeah. bad risk managers, and they are good traders. But would you consider a risk management part of the trading? Then I may beg to differ. Okay, but because their risk management goes out of the toss. But Yeah. traders, they are exceptional at picking up tops and bottoms. Like I have seen a few of my friends are amazing, amazing traders. But when they put, like, in terms of the psychology and everything and risk management, they go off. Can trading be taught? The answer is yes. Live example is in my firm. I have, like, a few colleagues that who came from a zero background of trading, but their trading would be like not very exceptional, but their risk management and survivalship in the market is just amazing. Yep. Yep. Totally agree, Vishal. Yeah. So I mean, if you are an average trader and you are a good risk management, right? Probably you are मतलब वही long race के घोड़े हो आप तुम फिर stock market में. Is that true, Vishal? Vishal, can you hear me? Yeah. Vishal, can you hear me? I think, yeah, maybe he's joining back, Vishal. So maybe, yeah, I mean, honest trader, अगर आपकी risk management नहीं है तो आप कितने भी अच्छे trader हो, probably he will never make a profit, right, in the long run. और Yeah. अगर आप average trader हो पर आपका risk management बहुत अच्छा है, तो you will always make money. That's my view, right? And that is 100% correct. और उसमें क्या है, क्योंकि 90% ऑफ द ट्रेडर लूज मनी करके वापिस हाँ, और नए 90 लोग आते हैं, राइट? correct. बिकॉज 90 लोग तो हर बार तो अपना पैसा नहीं तोड़ते. But हाँ, the thing is, the person who has been managing the risk is staying in the game for a while, is actually racking up on coming into the top 10%. Maybe he's not the top 1%, okay? Maybe he's not top 5%, maybe in the bottom 10%. लेकिन अगर वो bottom 10% में भी है, तो he's just surviving good enough, because that जो 90 लोग पैसा तोड़ रहे हैं ना, जो 90% लोग मार्केट में आ रहे पैसा तोड़ रहे हैं, वो 10% के पास जा रहा है, और 10% का आप 10वां भी परसेंट हो, you are well off doing business. And I think so, Dusty and Honest Traders, you guys are been profitable, right? And you are doing pretty well for yourself, because you are just on that. We are all in the top, like bottom half of that 10%, and we can do better of living with that. Yeah, I think the right. main part is not losing money, right? I think that's where you win the half battle, right? I think the rest half is won by being profitable, right? I think not blowing up So is the main. Yeah. I'll give you a very interesting story about, I think so there was this guy called Gaurav who helped me in the from like a broking from Share India. He gave me that ideology, and actually also
given by Larry Williams. I don't know whether you heard of a guy called Larry Williams. Have you heard of him? No, no, Vishal, No? No. no. Okay, interesting character. When I was in US recently, I met with him, and it was like dream come true to meet Larry Williams. If you can Google him, so I think so. He's a legendary trader by all means. So in US, एक trading championship होती है called Robin Championship something, where you bring with your own money. Okay, you trade for 1 year, and whoever makes the maximum amount of money will get name, fame, lot of funds from lot of different fund houses and everything. So this और guy, सॉरी विशाल, और Larry. आपस में होती है या मतलब ऑन मतलब किसी इंडेक्स पे होती है? नहीं नहीं आपस में वो लोग करते हैं? आपस प्योर अल्फा प्योर अल्फा आप अच्छा। कितना अपना पैसा है एवरीबडी ब्रिंग्स 10,000 to the table in terms of हम्म they give their audited accounts to that हम्म broking firm and they audit it saying that whether these trades that they have done are genuine or not. So everybody's trading. Okay, ओके it's या not against each other, it's basically how much ओके in a way it is against each other. Whoever makes the max money, like we have a world investing championship. Mark Minervini wins quite a few times, right? या तो या सिमिलरली ये या ट्रेडिंग चैंपियनशिप होती थी. अभी तो आई डोंट थिंक सो वो होती है. तो ही टर्न $10,000 into 1.1 million. He turned that वाओ 10,000 into 1.1 million dollars, not one times, I think so 2 or 3 times. He taught his strategies to his daughter, and she also won that trading championship once. Okay, वाओ so Wow. when I met him and I was like, give me the secret holy grail. So he just told me and it just baffled me away. Okay, Vishal, the secret ingredient of my success was very simple. I will have small losses, I have small gains. I will have a big profit, but I will never have a big loss. करेक्ट या So he kind of put and he told me like this, Vishal, it's okay to have a small loss. It's okay या to have a small profit. It's very good to have a big profit, but it's not okay with lot of emphasis to have a या big loss. And he said, your every big loss was once very small loss that you refused to take. Think about that. Right. I think वेरी it's Okay, no, ट्रू right. वेरी Yeah. ट्रू Yeah. Yeah. I mean, you okay, just, you अपने just, career. yeah. Sorry. No, go ahead. Go ahead, Vishal. Yeah. No. He just like again, said when he said that, and I just numbers were running through my mind कि मेरे जो भी बड़े बड़े लॉस थे वो एक टाइम पे तो मैनेजेबल लॉस ही थे लेकिन आई डिड नॉट एक्सेप्टेड देम थिंकिंग दैट इज गोइंग टू गो अप एंड दे टर्न आउट टू बी द बिगेस्ट लूजर्स. Correct. No, I think that करेक्ट is very true. I mean, people skip I mean, they just move their stop losses right beyond what they had thought earlier, and then actually they have to take loss at a much bigger amount than एंड they या had to take earlier, right? या एवरीवन हियर ऐसे इमोशन से गया होगा, राइट? एंड ही सेड ओ यार आज इतना लॉस हो गया, लेकिन 1 घंटे पहले तो वो उसका 1/10 था, राइट? तो वो इमोशंस सो दैट्स वेयर यू हैव टू स्टॉप या एंड मे बी वो उस पे भी रुक जाए बड़ी बात होती है. आई हैव सीन पीपल गोइंग, वो और वर्स हो जाता है बिकॉज एक बार लॉस लॉस बुक करना बहुत ही डिफिकल्ट है, राइट? तो True, true, true. So that's why what Okay. I've realized is a lot of army people turn out to be a good traders because the discipline of taking या small losses is ingrained in them. राइट या Okay. I think I don't have a pleasant experience with that. One of Air Force guy, he was traveling with me, and he actually told me to take his fund and trade on behalf of him. Oh my God. But I mean, that was a one-off, I'm sure. But honest trader, you can share your Yes Bank example that you shared with me. Oh yeah, I think that should be public, right? Yeah, that should be public. I Yeah, mean, let me just, I mean, give What? me 10. Yeah, probably I'll steal 10 seconds of yours, right, Vishal? So I no, no, had go just ahead. started. Yeah, I had just started trading, right? That this was in 2018, and Destin Musk, I mean, he introduced me to trading, and I started option selling, and I thought that wow, it's easy money, right? Everything goes to zero here, and I just sell far off OTM strikes, and then just sit back and relax, and everything will be pocketed into my account, right, trading account. And this is when I think in 2018 I shorted. I mean, I was short. I mean, I shorted the puts of Yes Bank. So I still remember. I think I had 300 PE short. So I had sold 300 PE for Yes Bank. I think it was quite a few multiple of lots there. And I think over the weekend the news came that Rana Kapoor has. I think he has not been allowed to continue his term with the Yes Bank, and some more news came of Yes Bank, right? And the next day, Monday morning, I think I was in North America with Destin Musk. Monday morning, Yes Bank opened 27 or 28% gap down. So
from 340 it was around 250 or 270, and I think market orders were also disabled at that time. And I was like, I didn't know what to do, right? Everything was, I thought that the world is coming down on me. I went to Destin Musk, and I told him, So like, what honest do I trader, do now? I think Yeah. it was a 2 rupees put which you sold so that you could have gained 2 rupees, and the 2 rupee opened as 50 rupees. Absolutely, and everything. I thought that, come on, man, this 2 rupees are easy money for me, but that didn't happen. And I think that's where I think everyone, has to learn a lesson, right, the hard way. And it's good, right? I think, but probably, that's the thing of the past. And if you learn from that, right, and you, Yeah. right now it's a thing of a past. And I think we were laughing about that yesterday, Vishal, and along with Destin Musk. So, but I think risk So management is very important there. Yeah. correct. And honest trader, I think that it's a good, excellent story for people who have faced losses, right? Excellent. So you revisit what you have done wrong, but don't exit, right? Exit हो गए तो सब कुछ खत्म हो गया ना. So this story is excellent. You lost like half of your My money in half of there. my capital was blown away at that Yeah, point. correct. Yeah. On one night, on one opening, right, over a weekend. And I was sitting there thinking that, wow, yeah, option selling is so easy. You get far OTM, you can just short far OTM options, and it's easy money. But that's not the story, right? And I think Yeah. Vishal put it right. I think the elephant and the chicken and the elephant story, right, with option sellers. They Yeah. shit like an elephant, right? Right. Okay, thanks. So I think, Vishal, so if I talk, we are talking about risk management, right? So what are the risk management rules that you actually always abide by, right, in your system, that this is always there? कुछ भी हो जाए ऊपर से नीचे, जमीन earthquake आ जाए, कुछ भी हो जाए, I'm not able to, I won't be losing this much. See, practical मैं answer देता हूँ. So once we have a rule that if we lose 1% in our intraday trading systems, we will shut it down. Okay, come what may. Okay, and if we are holding on to a position overnight, and if we have a hedge, because we do not do anything uncovered, everything is covered. But since it is an overnight and we do a lot of deep out of the money hedges, if the market gaps up or gaps down by more than 10% against us, we will at max will lose about 6 to 7%. That's what we kind of abide by. But currently, obviously, we never had that gap up, gap down against us so far, and hopefully it does not. But we always say your maximum loss will happen in the future, not in the backtest. So Yeah. yeah, these are the simple two rules. Secondly, a lot of people think that risk management is only money management or position sizing, but you can also think of risk management as diversification of your strategies. कि आपके पास कौन सी टाइप की स्ट्रेटेजीज आप चला रहे हो कि भाई मीन रिवर्जन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज है, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज है, थीटा डिकेइंग स्ट्रेटेजीज है. So you try to mix and match everything. I know it's not proper diversification per se, but we are predominantly an option player. But yeah, investment in my personal capacity, investment is a diversification. Even my insurance is a diversification. So those kind of diversification is, if you ask me what is the holy grail of trading, diversification with uncorrelated strategy is the holy grail. Correct. Correct. Because Yeah. if, as you rightly mentioned, अगर आपका correlation कम है, you will lose less. You will stay in the game for a long time, and if you stay in the game for a long time, पैसा automatically आ जाएगा. The problem is staying in the game for a long time. Right. I think वही survival is the key, right, in the markets. And once you survive, पैसा आपके पास automatically आ ही जाएगा. I think And a we very always good. That's it, man. Go ahead. No, I was just looking. So आपने जो एक point बोला कि there should be unrelated. उनका correlation आपस में जितना कम होगा उतना better रहेगा. ऐसा नहीं कि आपने SBI भी ले लिया, आपने ICICI भी ले लिया, and all those kind of things, right? और Bank Nifty भी कर रहे हो. तो अगर सब, then it is not a diversification per se. That is true. Even like, stocks to, what I say, commodity currency. Although we are हाँ. not there, we want to go, reach there, but at least जहाँ पे हम लोग कर सकते हैं हमारी strategies point of view से. In option we try to have a different kind of market regime. Like low wall regime के लिए क्या strategy है, high wall के लिए कौन सी है, trend following कौन सी है, mean reversion कौन सी है, those kind of stuff. Yeah. राइट. ओके विशाल. विशाल, एक और सवाल तो आई थिंक हम लोग बात कर रहे थे. तो एक तो ये है कि लोग एंटर तो कर जाते हैं मार्केट के अंदर, थिंकिंग ये तो बहुत इजी पैसा है, कुछ भी नहीं करना पड़ता, आई डोंट हैव अ बॉस, मेरे को आई एम ऑन माई ओन, राइट, और मैं पैसा भी लोग बना रहे हैं. एटलीस्ट सोशल मीडिया पे सबको ये दिखता है कि सब पैसा बना रहे हैं.
right? But actually there are people who make losses, right? Big losses. I mean the 90% or the according to the SEBI report, right? And I'm sure us 90% में से भी कई are who are repeated offenders, right? Here who come again, accumulate some money, again make a loss, accumulate money, again make a loss, thinking कि यार ये तो मैं recover करना है मेरे को, ठीक है? So a question, when do these people actually stop? I mean, what is this? What is your advice to them? कि नहीं यार, this is not my cup of tea. Trading तो मेरे से होगी नहीं. हाँ, सो उसके पहले मैं आई वांट टू आंसर कि भाई जो लॉस हो रहा है ना, वो लॉस क्यों हो रहा है, ठीक है? आई थिंक सो मैं पहले उसका आंसर देता हूँ एंड देन आई विल टेल यू व्हेन दे शुड थिंक दे शुड स्टॉप. पहला आंसर जो पॉइंट है कि लॉट ऑफ पीपल कम टू द मार्केट थिंकिंग इट्स इजी मनी, but they don't know what is their style. What do I mean by style? Like, if you come to the market, आपने किसी का एक वीडियो देख लिया यूट्यूब पे, उसने करोड़ों रुपए बना लिए हैं, ठीक है? आपने जाके उसकी यूट्यूब के लिए बोला इसने तो बनाया तो मैं भी बनाऊंगा, मिस्टर वॉरेन बफेट ने बनाया तो मैं भी बनाऊंगा, एंड यू फॉलो अ अप्रोच दैट इज बीन डिफाइंड बाय देम, ओके? एंड देन यू ट्राई डूइंग दैट, वहां पे आप कैपिटल ब्लो करते हो, फिर आप कैपिटल जमा करते हो, किसी और को ढूंढते, बोले पहले वाला तो फ्रॉड था. बिकॉज वी नेवर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? अगर Yeah. नुकसान होता है तो सामने वाले को बहुत इजीली हम लोग ब्लेम कर देते कि सामने वाला फ्रॉड है, पर कभी भी अपने आप को Correct. ब्लेम नहीं कर सकते कि बस मैं लालच में आके ये सब सीखने आया था. दूसरा, फिर देन यू फाइंड आउट सम अदर वन हु इज मेकिंग इवन मोर मनी देन दैट गाय, यू कम बैक अगेन एंड ट्राई टू ट्रेड विद दैट मनी, यू ब्लो अप दैट अगेन ऑल्सो. देन यू सेड अच्छा ये वाला भी फ्रॉड है, यू गेट द थर्ड राउंड ऑफ मनी एंड फाइंड सम अदर वन and try to trade that strategy or a system and lose it all back again, and you say कि stock market में सब चोर है, ठीक है? But you never blame yourself, but you always blamed everyone else. So in that way I always tell people whenever who reach out to me first, if we want to make a career or we want to enter the market, how do we enter? मेरा पहला आंसर उनको ये होता है कि read this book called as Market Wizard. Again I told you that, right? This is the classic book. जब भी मैं ड्रॉ डाउन में होता हूँ, आई पिक अप दैट बुक एंड स्टार्ट रीडिंग इट, ओके? बिकॉज दैट इज अ क्लासिक बुक वेयर ही इंटरव्यूज, द ऑथर जैक श्वेगर इंटरव्यूज द वर्ल्ड्स टॉप ट्रेडर. एंड बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है वो बुक में, कि नन ऑफ द ट्रेडर हैज द सेम स्टाइल. मतलब कोई स्काल्पर है, कोई फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई इकोनॉमी देख के ट्रेड कर रहा है, कोई करेंसी ट्रेड कर रहा है, कोई बॉन्ड ट्रेड कर रहा है, कोई ट्रेंड फॉलोइंग कर रहा है, कोई मीन रिवर्जन कर रहा है, कोई ऑप्शन कर रहा है. नाउ व्हेन यू गो थ्रू दैट बुक, ओके, व्हेन यू गो थ्रू दैट बुक, वो कुछ 15 या 20 ट्रेडर्स के इंटरव्यूज है, और उसकी एक पूरी सीरीज भी है, मार्केट विजार्ड, न्यू मार्केट विजार्ड, स्टॉक मार्केट विजार्ड, हेज फंड मार्केट विजार्ड एंड अननोन मार्केट विजार्ड. बट व्हेन यू गो थ्रू दी स्टोरीज ऑफ दिस ट्रेडर्स, समवेयर यू विल बी एबल टू रिलेट योर सेल्फ. समवेयर आपको अगर स्टॉक मार्केट पता भी नहीं क्या है, लेकिन उसकी स्टोरी पढ़ के आपको बड़ा पसंद आएगा कि हाँ भाई ये बंदा जो बोल रहा है ना बहुत सॉलिड बोल रहा है. मेरे लिए वो एडवर्ड साइकोटा था, ओके? किसी के Okay. लिए मार्क डगलास हो सकता है, किसी के लिए वन थार्प हो सकता है, किसी के लिए जो हो सकता है. लाइक देयर आर सो मेनी अदर ट्रेडर्स इन दैट. तो यू विल ट्राई टू यू विल बी एबल टू कोरिलेट. मतलब आपको अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना, फिर भी यू विल बी एबल टू रिलेट टू दैट स्टोरी. मोटा मोटी चांस है कि ये आपकी स्टाइल है, ठीक है? ये आपकी स्टाइल है कि भाई आप ट्रेंड फॉलोअर हो, आप मीन रिवर्जन ट्रेडर हो, आप स्काल्पर हो. क्योंकि अगर आप बहुत इम्पेशेंट हो तो शायद आप एक मार्क करके बंदा है, ही यूज्ड टू ट्रेड S&P फ्यूचर्स, बट ही विल ट्रेड फॉर 1 minute and 5 minutes. So you may be able to relate to him. Then there are guys who is very disciplined, then he may be able to relate to Edward Saikota. So depending on the style you find out कि हाँ भाई ये मेरी स्टाइल है. अगर आप ये एक्सरसाइज बराबर से कर सकते हो तो आई थिंक सो आपका एक एटलीस्ट 30 to 40% आपका बैटल वन हो गया कि आपकी स्टाइल क्या है. वंस आप मार्केट में आओगे चेंज होगा, वो अलग बात है. वंस यू कम इनटू द मार्केट एंड देन यू फेल, दैट्स ओके. But if you don't know what is your style and you keep on coming back again and again and again and again, somewhere there is no right answer कि भाई ये मेरे लिए नहीं है. बट हाँ, उसके लिए खाली एक ही आंसर होना चाहिए कि व्हाट इज योर रियल पर्पस ऑफ कमिंग टू मार्केट. अगर आप बोलते हो मेरा बॉस ठीक नहीं है, इन योर केस यू आर वेरी लकी. बट what happens is if if you don't like your boss and you want to do a trading because I am my boss,
that's a wrong reason to come. So I always tell, okay, if you don't like your boss, get a home loan. And if you if you don't like, You will you have will to, start yeah. liking Yeah. you will start liking your boss. And if you don't like your job, take another home loan. Take two home loans. You will start liking job also. Yeah, yeah. So Eh, in that yeah. way, I would always say कि boss, your reason to come to the market has to be very clear. मेरे लिए ये जो मार्केट में आने का रीजन क्या था पता है? मेरा रीजन था, आई लाइक द जिक्सो पजल ऑफ सॉल्विंग द मार्केट. इट वाज नॉट नेवर मनी. मेरे लिए मार्केट मनी वाज अ बाय प्रोडक्ट. ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, ऑनेस्ट कन्फेशन. ठीक है, पैसा मेरे लिए मैटर नहीं कर रहा था. मेरे लिए एक जिक्सो पजल थी कि बस मैं जो सोच रहा हूँ और मार्केट की कलेक्टिव साइकोलॉजी क्या बोल रही है, एंड आई एम बैटिंग ऑन दैट. दैट रियली काइंड ऑफ गेव मी दैट थ्रिल टू बी इन द मार्केट. So for me, it is a constant endeavor to understand what the market is doing. लो विक्स रिजीम में क्या चल रहा है, हाई विक्स रिजीम में क्या चल रहा है, ये स्ट्रेटेजी क्यों चल रही है, व्हाट इज द काइंड ऑफ स्टाइल दैट मार्केट इज डूइंग राइट नाउ. It really fascinated me, and that really helped me to stick to the market for a long period of time. I Yeah, think Vishal, very well sorry, put. Yeah, 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 and I yeah, very think well put, Vishal. Sorry, honest, I just want to add to it. तो बहुत सही से बोला. और see, I also totally जैसे विशाल ने बोला कि what was the kick and why do you get into the market, right? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आप मार्केट में कुछ सोचो, अपना दिमाग लगाओ, कुछ कुछ भी करो, आपको रिजल्ट फटाफट दिखता है, राइट? ऐसा नहीं है कि मैं 10 साल पढ़ के उसके बाद मैं देखता हूँ मेरी जॉब लगती है कि नहीं. ऐसा नहीं है कि एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ, 1 साल किया, 2 साल किया, उसके बाद उसका रिजल्ट आ रहा है. मार्केट में आप जो भी कर रहे हो, आपने जब वो किया, आपको उसका रिजल्ट दिखाई देता है, तो वो जो आप थ्रिल में आती है ना, कि आप अपने आप को चेंज भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो, मतलब यू कैन मैन्यूवर योरसेल्फ ताकि आप फिट कर सको मार्केट में. वो थ्रिल जो आता है, फ्लेक्सिबिलिटी जो दिखती है, वो कहीं और नहीं है. So I true. think वो instant gratification type हो जाता है ना कि आपको instant results दिख रहे हैं आपको. And that's why people come here, right? जितने भी Yeah. लोग आए हैं, maybe it's not right. I'm not saying it is right. I'm saying what pulls people to market, right? क्योंकि वो सोच सकता है कि आज आए हैं, शाम में मेरे को रिजल्ट दिखना चाहिए. वो चीज गलत है. लेकिन that is what is pulling people. Yep. Right. Okay, I think thanks, Vishal. I think it's a good one. Probably, I think this was one of my question as well. Probably you can list down some books, right? That people who are entering the market, I think they should read those first, and then only. I mean, that is the prerequisite. That's when अपना पैसा लगाओ तुम market के अंदर. अगर ये books So नहीं पढ़ी हैं आपने और इसमें से नहीं कुछ किया तो I think you should stay away from the market. That is a prerequisite. I think so. It's a good idea. Let me just jot it down Sure. on the thread that you have already built. I will jot it down. Perfect, Vishal. I think और this would really help the trading community here. और ऑनेस्ट है, जब जब तुमने क्वेश्चन पूछा ना, व्हेन वन शुड एग्जिट, तो मेरे दिमाग में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया. उससे ज्यादा जरूरी है व्हेन शुड समवन एंटर, राइट? तो वही विशाल ने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि लाइक आपको अपना तरीका, अपना प्रोसीजर, अपना आप हो क्या, आपका स्टाइल क्या है, राइट? वो देख के ही एंटर करने का है. वेरी गुड. And Probably I would wise also minds tell think you alike, one thing. right? Yeah. And I will also tell you one important thing. Just like everybody बोलते हैं और कोई अच्छे बंदे ने बोला है तो just don't take it कि that is the truth. I'll give you a very honest confession here. I think so when I jumped into systematic trading, I was told if you are disciplined in your life, then you will be disciplined in your trading, and that's 99% correct. Okay. That मतलब जो एक मेरे मतलब जिसको मैं look up to करता था, he has this very strong statement saying that if you are disciplined outside, you will be disciplined inside, right? But for me, it was completely different. I'm completely undisciplined when it comes to my outside life. Okay, I will do whatever I want to do. But when it actually, I'm a little lazy. Okay, and that is my advantage. I turned my disadvantage to my advantage because I'm little lazy. I wanted everything to be automated. And the only एग्जैक्टली. thing that I kept in the system was कि भाई मेरे को मेरी सिस्टम को छेड़खानी नहीं करनी, बिकॉज अगर मैं छेड़खानी करूँ तो मैं सिस्टम ही क्यों बना रहा हूँ. Why am I automating if I really wanted to play around with it every time? The या. precise reason I'm lazy, I don't wanted to trade day in day out, and that's why I built that up. So just also एक learning मेरी रही है कि just don't take what everyone says. You define your own path, you define your own style, you define your own trading systems. या
Yeah. तो जैसे मैं अपनी टीम को कई बार बोलता हूँ ना, तुम एक काम, लेजी वाला बहुत बढ़िया पॉइंट है विशाल। तो लाइक तुम एक काम करो, एक बार करो, 2 बार करो, तीसरी बार अगर तुम वो काम कर रहे हो ना, तो देन मतलब तुम मजा नहीं आ रहा कुछ, राइट? तो मतलब वो आप ऑटोमेट करना ही है वो तीसरी बार। आप कितनी बार सेम काम करोगे और उसमें गलती करोगे ही, फिर अगर आपको वही काम करना है तो ह्यूमन एरर आ जाएगा। तो जस्ट ऑटोमेट इट इफ यू आर सक्सेसफुल इन इट। एंड आई बिलीव लाइक स्ट्रांगली बिलीव कि अगर आपको कुछ भी अच्छा काम करना है ना, कोई भी बड़ा काम करना है ना, तो एक लेजी पर्सन को दे दो। ही विल फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट वे टू गेट दैट वर्क डन। यस यस, वेरी ट्रू। Correct. I saw your video or somewhere, right? Regarding systematic trading, and the next thing that I did was purchase the Zerodha API, started coding in Python, and I have deployed everything on the server now. Oh, The only nice, thing I super. monitor, the only thing I monitor is my position, like, and in case there is any error, right, a pop-up comes in True. that this has went wrong. Right. That's true. Okay. Yeah, this was good, Vishal. Vishal, one more question. I think probably that I have is so. कभी कोई ऐसा मोमेंट हुआ है मार्केट के अंदर जब आप, आई मीन बिफोर यू वर सिस्टमैटिक, राइट, कि बॉस नो, आई हैव मेड अ ब्लंडर दैट आई शुडंट हैव हैड मेड दिस इन द मार्केट विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट? ऑनेस्टली कभी मतलब मैंने मतलब ब्लंडर्स मतलब ट्रेडिंग डिसीजंस रॉन्ग लिए हैं, बट लकीली इट नेवर वेंट टू अ लेवल वेयर आई सेड कि बॉस व्हाट हैव आई डन। नेवर टेक अ लोन, नेवर टेकन एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। जो पैसा था उससे ही ट्रेडिंग करता था। ब्लंडर्स नहीं थे, जस्ट जो रिस्क मैनेजमेंट पढ़ाई करने के बाद। तो कभी कभी क्या होता है पता है, आप जब भी ज्यादा पढ़ भी लेते हो ना, वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। ओके क्योंकि बिकॉज व्हेन यू आर लर्न सो मच, व्हेन यू लर्न सो मच, व्हेन यू रीड सो मच, यू एक्चुअली बिकम फ्राइटन। ओके या अगर जो बंदा, और मैंने दो तरीके की स्टोरी सुनी है। हम लोग ने ऐसी स्टोरी भी सुनी है कि भाई अ पर्सन हु डिड नॉट 10th पास है एंड ही जस्ट मेड सो मच ऑफ मनी, राइट। एंड हम लोग ने वो भी स्टोरी सुनी हुई है कि भाई जो 10th पास है वो करने के और उसने अपना घर भी निकाल दिया, सब बाजू वाले का भी घर बेच दिया और वट एवर। The thing is, the more you get educated, the bigger the fear comes into your mind. The bigger the fear in your mind, the bigger chances that you will, you will not take big risk. So whenever you hear big stories about big traders, always remember that कि उनकी लाइफ में वो लोग एक या दो मैक्सिमम तीन बड़े ट्रेड की वजह से बड़े ट्रेडर बने हुए हैं। आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग इट, बट मिस्टर राकेश झुंझुनवाला का सबसे बड़ा ट्रेड था सेसा गोवा, टाटा पावर एंड टाइटन, राइट। टाइटन, या राइट, दिस टाइटन तो अभी है, लेकिन व्हेन ही स्टार्टेड आउट टाटा पावर एंड सेसागो वाज देयर मेजर बैट। So ओके। every big trader has taken disproportionate risk at one point of time to become very big. And we always hear these good stories about, a small time trader becoming multi-billionaire और multi-millionaire, but आप देखोगे तो उसकी एक या दो या तीन पिक बहुत ही एक्सेप्शनली चली गई। बट अनफॉर्चुनेटली वील नेवर हियर द स्टोरीज ऑफ पीपल जिन्होंने ये तीन बैट ली थी लेकिन वो कभी चली नहीं, एंड दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग। So when you एज अ ट्रेडर मैं था, तो अनफॉर्चुनेटली आई वाज नेवर एबल टू ब्रीच दैट लाइन कि बॉस आई एम गोइंग इनटू अ जोन वेयर आई एम गोइंग टू लूज माय हाउस, आई एम गोइंग टू लूज माय स्लीप, आई एम गोइंग टू लूज एवरीथिंग, एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट अ बिग ट्रेडर। या या Yeah, I think that's the advice that everyone should follow here, right? Don't leverage, या don't take loan, right, to come into trading. I think या that's the main, yeah. Trade with your own money, right? Probably, and not take any relatives' money as well. That is also very true, right? See, Just trade on that your is money that honest. you can afford to lose, right? Yeah, No, but then I would also again tell you that you may be wrong. Okay, let's correct. Yeah, that is true. Yeah, whatever we say, whenever I say, okay, take everything that everyone says, even if they have a 1 lakh follower, 5 lakh follower, or whatever, just take it with pinch of salt that everyone says. We are saying from our perspective. correct. Yeah, Maybe that trader is genius, okay, and he can manage the leverage. He can really take care of the leverage, and he can become a big trader. And maybe some of them maybe in this what do you call it, is this the Twitter space, right? space, Yeah, yeah, in the space. And if they can manage the leverage well, I think so that this advice is not applicable to you. You take leverage, but then you should know what you are getting into. correct. या That is Just true. don't I take think whatever we are saying. perfectly या वी आर जस्ट articulated, शेयरिंग आवर Vishal. एक्सपीरियंसेस, राइट? तो Yeah, एक्सपीरियंस विल yeah. चेंज ओवर टाइम, लेकिन हम लोग तो वही बोल रहे हैं जो हमने देखा है।
But yeah, Yes, I yes, mean, yes. we have to find correct. Yeah. And regarding your information thing, right? I think I'm sure Destin Musk. I think you were telling me regarding personal stories, right? Regarding Yeah. people from IITs and IIMs. Probably you want to elaborate on that. Yeah. कि वो कैसा perform कर रहे थे during your stint with Futures First, right? या सो हम लोग तो हर जगह से हायर करते थे ना, तो आईएम से भी, आईआईटी से भी, आईएम ए से भी लोग आते थे, राइट नाउ। Yeah. अगर जब वो, और डीयू से भी लोग ले लेते थे हम, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो हमने मतलब कोई ऐसा चीज थी ही नहीं, जैसे आई थिंक विशाल यू सेड बिफोर कि कोई कितना ज्यादा पढ़ा हुआ है, कितना ज्यादा उसको प्रेशर उसके ऊपर ज्यादा था। अब वो बोल रहा है यार, ये जो बीए करके आया है डीयू से, इसका मंथली पीएनएल में से ज्यादा बन रहा है। उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता था और वो और पर बेकार परफॉर्म करता था। सो सो व्हाट आई हैव सीन इज कि आईक्यू इज इंपॉर्टेंट, बट मोर देन दैट ईक्यू इज इंपॉर्टेंट, व्हिच आई ऑलवेज से। इमोशनल क्वेश्चन जो बंदे का होता है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईक्यू उसके ऊपर आइसिंग है। अगर आपका ईक्यू सही नहीं है ना, आपका आप मतलब, एंड वो बहुत टर्म्स में बोला जाता है, साइकोलॉजी एंड ऑल दैट स्टफ, बट फाइनली इट्स योर इमोशनल क्वेश्चन, हाउ डू यू रिएक्ट टू सिचुएशंस। वो अगर आपका ठीक नहीं है, तो आपका कितना ही आईक्यू, आइंस्टाइन नहीं कर सकता था, राइट। तो सही बात है। दैट्स व्हाट आई लर्नड। All right, I think perfect example, right, on this the IQ and the EQ, right? Vishal, one last question before we jump on to that. Probably in case Destin Musk wants to ask, but one last question from me. आपने ये बोला ऑटोमेट कर देते हैं, आई थिंक वी आर गुड विद दैट। अब ऑटोमेशन के तो इतने सारे टूल्स दे आर रेडिली अवेलेबल, राइट? कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, दे आर प्रोवाइडिंग ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजीज, तो हर कोई जाके वो डिप्लॉय कर देगा। तो व्हाट्स योर राइट। टेक ऑन दैट? आई मीन रिटेल ट्रेडर्स तो जाके बोलेंगे कि नहीं यार, ही इज चार्जिंग मी प्रॉब्ली पर एनम का इतना मेरे को ये चार्ज कर रहा है, आई एम गुड विद दैट, क्योंकि ये तो मेरे को प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी दे रहा है। मैं इसमें अपना 1 CR जाके लगा देता हूँ, तो मेरे को तो कुछ नहीं करना। मैं रात को सोता हूँ, सुबह मेरे को पैसा मंथ एंड में पैसा दिख जाएगा मेरे को एमटीएम अकाउंट में, या डे एंड में पैसा दिख जाएगा। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ये तो सभी कर रहे हैं फिर। Interesting question. I would pass it on to Destin Musk. What do you think? नहीं नहीं नहीं, आई थिंक वी इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सारे लोग वही करेंगे तो सब पैसा कमाएंगे ना, तो कोई तो लॉस करेगा नहीं, राइट। No, तो sir, हम सब I'll tell you. Good, 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 good. Sorry. या नो नो, या सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ऐसा हो नहीं सकता है। तो सब लोग पैसा बनाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। इट्स अ नेगेटिव सम गेम। जो लोग इसको जीरो सम गेम बोलते हैं, मैं वो भी डिसएग्री करता हूँ। इतना ज्यादा टैक्स है, इतना ज्यादा चार्जेस हैं, तो आपका नेगेटिव सम गेम है। आप 100 ट्रेड करते हो, पता नहीं, अगर आप जिरोदा पे कर रहे हो 20, तो इंटू 100 रुपए, आपका 2000 रुपए तो ऐसे ही उड़ गया, राइट। तो इतना नेगेटिव सम गेम है। उसके बाद कितने लोग ट्रेड करेंगे, और वो भी आप अपना टाइम भी लगा रहे हो, राइट। तो वो अभी आप नेगेटिव डायरेक्शन में डालो, तो टाइम भी लगा रहे हो, पैसा भी लगा रहे हो, और आपको वो सब कंपनसेट करके मिलने वाला है। तो सब लोग नहीं बन सकते हैं। सो ऑनेस्ट ट्रेडर, आप अगर सोच रहे हैं कि हम कहीं वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ ब्लिस, दैट्स नॉट ट्रू। तो आई थिंक आपको मैं भी सोच रहा था कि न्यूजीलैंड जाऊंगा विशाल भाई के साथ यहाँ पे पैसा डाल। तो या ऑल आई विल से इज, जब वो सिचुएशन आएगी कि सब लोग एक एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं ना, तो जो पैसा बनाने वाले हैं वो प्रॉब्ली दूसरे डायरेक्शन में भागेंगे। तो तो बेसिकली आपको ये नहीं सोचना है कि आप भीड़ के साथ भाग रहे हो। आपको, एंड आई एम वी आर जस्ट रीट्रेटिंग व्हाट वी सेड, अपना स्टाइल बनाना है। आप, अगर आपको ये लगता है कि बहुत इजी मनी है, ऐसा कर लोगे, तो प्रॉब्ली आर गोइंग रॉन्ग समवेयर। अपना स्टाइल क्या है, आप कौन हो? क्योंकि जब वो आप एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हो, वो कुछ लोग बीच में रुक जाएंगे, कुछ लोग कहीं और रुक जाएंगे। आप भागते जाओगे, और आप आगे देखो, आगे खाइए, राइट। तो मतलब आई एम जस्ट पुटिंग इट मोर मेटाफोरिकली, लेकिन इट्स मोर कि इफ यू डोंट हैव योर ओन स्टाइल, सेम डायरेक्शन में जाने से पीपल विल, हु विल एक्चुअली मेक मनी विल बी द ऑपोजिट, बिकॉज दे ऑल नो कि भाई तुम तो इस डायरेक्शन में जा रहे हो, एवरीवन इज डूइंग दिस थिंग, सो आई विल मेक मनी इन द रिवर्स। So True. that's not going to happen in a long run, honest trader. Or if uh, people have to have their own style. I think that's the crux Vishal mentioned, and which is very true. इसको मैं थोड़ा एक इलाबरेट, खाली एक सेंटेंस के साथ इलाबरेट करूंगा कि वी थिंक के पैसा बनाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक्चुअली पैसा कैसे बनता है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई टेल यू दी ऑनेस्ट, आपने बोला ना कि अभी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे स्ट्रेटेजी डाल दो पैसा आते रहेंगे, या किसी ने अपनी स्ट्रेटेजी ओपन करके दी है, आप उसको सब्सक्राइब कर लो। द प्रॉब्लम विद दैट इज कि व्हाट्स योर स्टाइल। ओके, अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हो और किसी की आपने एग्रेसिव स्ट्रेटेजी ले ली, आप बंद कर दोगे, भले पैसा बन रहा है। और मेरे पास इत एम्पल अमाउंट ऑफ एग्जांपल्स है
where people had made money but they stopped it because वो रात को सो नहीं पाते थे कि बस इतना पैसा इतनी जल्दी कैसे आ सकता है, और वो चला भी जाता है. So that's हाँ, where I kind of believe that people, और जैसे डस्टी ने बताया कि it's not about the money, it's how the money comes. And most of the people will jump or stop the trading systems because that's not their style. And nobody will trust another person, क्योंकि आज की तारीख में कुछ भी कर लो, आप एक ब्लैक बॉक्स पे पैसा लगा रहे हो. एंड इफ यू जैसे ही ड्रॉ डाउन हो जाएगा ना, फॉरगेट अबाउट द पर्सन हु इज गोइंग थ्रू द ड्रॉ डाउन. जो जिसने स्ट्रेटेजी क्रिएट की है ना, वो भी अगर पहली बार ड्रॉ डाउन से जाएगा ना, तो उसका भी दिमाग हिल जाएगा. एंड दैट्स व्हाट आई से कि यू हैव टू गो थ्रू एटलीस्ट 2 drawdowns and come out of that drawdown to be completely confident about a system. या तो उसका एक विशाल, मैं जैसे मैं बोलता हूँ ऑनेस्ट ट्रेडर को, मैं बोला भाई आज ये खरीद ले सुबह सुबह ना, और ही गोज एंड बाय इट. अब उसके दो चीज हो सकती हैं, वो अप जाता है, ठीक है. अब वो अगर अप जाता है तो ऑनेस्ट ट्रेडर को लगेगा यार ये तो अप जा रहा है, पर ये मेरे को पता नहीं क्यों जा रहा है, राइट. इट इज अ ब्लैक बॉक्स फॉर मी एज यू सेड. तो इफ इट इज अ Right. ब्लैक बॉक्स फॉर यू, तो शायद आप 2-3% पे ही कट लोगे, राइट. और सही बात. अगर अगर मान लो वो नीचे गया, तो आप बोलेंगे यार ये नीचे तो जा रहा है, पर बताया तो भाई एक अच्छे बंदे ने है. हम्म. राइट. तो वो अपना वो तो निकल लेगा, लेकिन यू विल कीप हैंगिंग ऑन टू इट, प्रॉब्ली ऐड मोर. तो क्योंकि वो आपका स्टाइल नहीं था, तो यू सही डिडंट बात हैव है. कन्विक्शन, दैट वाज नॉट योर स्टाइल. तो आप यू विल फॉल बिहाइंड. तो जब तक आपका कन्विक्शन नहीं होगा, जब तक आपका स्टाइल नहीं होगा, यू विल नेवर बी मेकिंग मनी लॉन्ग टर्म. I think that's the underlying. I So think borrowed conviction पे trading नहीं चल सकती. I think that is very true. Trading और probably investing है जो right नहीं चल सकता. and I have, like, again, quite a few examples when they're running a system from someone else, like, the publicly available trade platforms. वो जब भी प्रॉफिट होता है ना, तो वो जो ट्रेडर होता है ना, जिसने पैसा डाला है, ही थिंक्स कि आई एम वेरी स्मार्ट. अभी मार्केट या घूम जाएगा, लेट मी बुक दी एल्गो. ठीक है. या बट व्हेन जब भी लॉस होता है ना, तो जैसे डस्टिन ने बताया, विल वेट फॉर द स्टॉप लॉस टू कम. And या eventually, in the long run, it will be a loss making system. And I'll give you with my live example. Okay. So I was just running this trading strategy called as intraday mean reversion, जहाँ पे सिंपल स्ट्रेटेजी थी. अगर कोई स्टॉक 3% से आज बढ़ा है, तो कल 1% ऊपर बेच दो, और इंट्राडे में शॉर्ट करो, और नीचे कवर करने के लिए रख दो. एवरी डे, मैं ये सिस्टम रिलीजियसली फॉलो करता था. माय ब्रोकर यूज्ड टू ट्रैक दैट सिस्टम. ओके. एंड यूज्ड टू से, विशाल, इंट्राडे में तो हमेशा पैसा बनाता था, लेकिन एंड में तो क्यों लॉस में आ जाता है? तेरे पास प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को लॉस में टर्न करने क्यों देता है? व्हाई डोंट यू बुक इन बिटवीन? तेरे को 10,000 मिल रहा था तो 10,000 पे बुक कर, 5,000 पे कर, 1,000 पे कर, पर तू उसको नेगेटिव क्यों लेके जाने दे रहा है? बोला, दिस इज माई सिस्टम, दिस इज व्हाट आई फॉलोड. ये सब सिस्टम नहीं चलती, आई विल डू समथिंग डिफरेंटली. उसने बोला, मैंने बोला ओके, क्या करना चाहते हो आप? तो उसने बोला कि कल से यही तेरी जो सिस्टम है, 2 जन चलाएंगे. एक मेरा डीलर चलाएगा, एक तेरा डीलर चलाएगा. ठीक है. मेरा मेरा डीलर को मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा कि जब भी पोजीशन काटनी है, मैं उसको बोलूंगा तेरे वाले में तेरे को जो करना है कर. तो मैं बोला या ओके, आई विल फॉलो द सिस्टम. तो फर्स्ट डे पे जैसे ही प्रॉफिट हुआ, कुछ उन्हें 10-20 हजार का प्रॉफिट हुआ, उन्होंने बुक कर लिया. मेरा भी 10,000 दिख ही रहा था सिस्टम में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 3,000 का प्रॉफिट हुआ सोलो. तो ताकि खुश मुझे शाम. समझा, देखा विशाल, कि शाम को, विशाल, आई टोल्ड यू, सी आई एम वेरी स्मार्ट. मतलब फॉर या परफेक्ट. देन ही डिड इट अगेन, एंड उसने कुछ ज्यादा बना. ये 3-4 दिन चला. फिर एक दिन लॉस आया. ठीक है. तो उसने लॉस भी लिया. ठीक है. उससे हमारे दोनों का लॉस भी सेम हुआ. इसे, सी विशाल, आई मेकिंग लॉट ऑफ मनी. बट देन देयर या वाज अ डे वेयर 3,000 का प्रॉफिट आया, 10,000 वाला 3,000 हुआ. ही बुकड इट आउट, क्योंकि बॉस मेरे को लॉस में नहीं करना है, एंड आई स्टिल स्टिक टू माय सिस्टम. एंड इट गेव मी सम 70-80,000. तो मेरा जो या भी लॉस हो रहा था, और जब भी हम लोग ने क्वार्टर एंड पे जब भी हिसाब निकाला, तो ही वाज ब्रेक इवन एंड आई वाज वे अहेड ऑफ हिम. So the या idea was to stick to a system if you're trading it. करेक्ट करेक्ट, वेरी ट्रू. Okay, perfect. Thanks, Vishal. I mean, thanks for all these lessons, right, that you have been telling and all the stories, right, real life examples. So probably, Yeah, real life examples. yeah, real life examples, right? So, Matt, probably, I think I'll open up the forum for the audience, right, to ask questions. Vishal, is that okay with you? And probably Destin, I think if you want to come in as well, you can also answer a few questions. Is Yeah, that okay, when did Vishal? you? Yeah, सबसे पहले विशाल, when does your day starts, trading day, and when does it end? Trading day.
मतलब It सुबह never सुबह ends, कितने to be बजे? honest. हाँ, It never ends because I अच्छा, like I when we met up with Tanmay as well the other day, like I will abhi just I was sitting and I was just working on some profit booking strategies. At हम्म, around 12 o'clock, I messaged him. You know what? I think so. हाँ, We should try this out. So I think ओके, so. That's what I said. I'm just passionate about market and solving that market puzzle. So it never ends. But yeah, morning में अगर बोलोगे तो by 7:30 I woke up and I don't have a routine of gym and all that stuff. I just directly go to the office. So at ओके, about 9:15 I'm logged in into the system just to make sure. And हाँ, lot of लोगों की बहुत misconception है कि भाई अगर आपने एल्गो ट्रेडिंग कर दी है तो मतलब हाँ, यू आर ऑन द हवाई और यू आर ऑन द गोवा बीच हाँ, स्लिप ऑन वो पहन बीच। के आप बीच के सामने आप ट्रेडिंग कर रहे हो. नो डजंट वर्क दैट वे. वो पिक्चर के लिए अच्छा है, फोटो लगा के। इंस्टाग्राम में अच्छा है बट ट्विटर पे या रियल लाइफ में नहीं है. Correct, correct. So, see, that is the passion. I mean, everyone listening here, I think it should be right. आपका वो passion है, वो problem solve करनी है, वो आपको लगती है problem ऐसी है और मैं solve कर सकता हूँ, उसका reason मेरे को result भी दिख रहा है, but I'm too passionate to leave it aside. Very good. Yeah. Hello, So I think Vishal I've sir. opened the phone. Go ahead, Hemant. Yeah. Yeah. Oh yeah. Hello, Vishal sir. I am big fan of you. I learned a lot of things with you. Thank you so much for your Thank learning. thank you, man. थैंक यू सर. माय क्वेश्चन इज दैट अगर सिस्टम का मैक्सिमम हिस्टोरिकल डीडी हिट हो जाता है तो हमें उसके बाद क्या करना चाहिए? स्टेप्स क्या क्या रहते हैं? मैक्सिमम ड्रॉडाउन आ गया तो हाँ, तो उसके बाद हमें कैसे रिएक्ट करना होता है? सही बात है. अगर ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हेमंत. आई थिंक सो. दो चीज है. एक थियोरेटिकली बुकिश आंसर मैं देता हूँ. बुकिश आंसर ये है कि आपका जो हिस्टोरिकल ड्रॉडाउन है ना कि भाई आपने जी. देखा है कि ये सिस्टम का मेरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन इन द हिस्ट्री इज 5%. एंड वी या. ऑलवेज से दैट आपका हिस्टोरिकल मैक्सिमम ड्रॉडाउन नहीं मतलब मैक्सिमम ड्रॉडाउन फ्यूचर में ही होगा क्योंकि पास्ट में तो आपने 5 साल का डेटा ट्रेड किया हुआ है या दस हाँ साल जी. का बैक टेस्ट किया हुआ है. लेकिन हाँ मार्केट जी. इवॉल्व होता है राइट. तो आगे के 10 साल में आपको मैक्सिमम ड्रॉडाउन आएगा. तो बुकिश आंसर हाँ. ये है कि आप 2 टाइम्स हिस्टोरिकल ड्रॉडाउन आता है ना तो वो सिस्टम को बंद कर देना चाहिए बुक बुक के हिसाब से. ठीक है. लेकिन मैं या. आपको हाईली एंकरेज करता हूँ. देर इज दिस गाय कॉल्ड अंकित गर्ग. गुड फ्रेंड ऑफ माइन. या. अंकित अंडरस्कोर कॉन्ट करके उनका शायद ट्विटर हैंडल है. उन्होंने एक थ्रेड लिखी थी. व्हेन डिड द 920 स्ट्रेडल स्टॉप वर्किंग. और उन्होंने एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि या. आपने हर रोज ट्रेड की है. ठीक है. आपकी एक हिस्टोरिकल या. ट्रेड हिस्ट्री है. यस. या. वो हिस्टोरिकल यस. ट्रेड हिस्ट्री को आप एक मोंटे कार्लो सिमुलेशन में डालो. आप गूगल सर्च करना मोंटे कार्लो सिमुलेशन. वो क्या करता या. है कि आपके ये जो ट्रेड्स होते हैं ना उसको या. रेंडमली ऊपर नीचे करता रहता है. ठीक है. और या. कुछ 20,000 अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाता है. उसका एक इक्विटी कर्व बनाता है. या. एंड वो जो लोएस्ट इक्विटी कर्व होता है मतलब आप समझ लो कि आपका खराब पीरियड चल रहा है और आपके सब जो लॉस वाले ट्रेड है पहले आ गए हम्म. रेंडमली. या. ठीक है. तो आप कितना या. कैपिटल लॉस कर सकते हो. या. और अगर वो आपका बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है आपकी साइकोलॉजी के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है आई थिंक सो या. वो सिस्टम तभी आपको बंद कर देनी चाहिए कि भाई ये 10% का मैक्सिमम लॉस है. मैं इससे ज्यादा नहीं ले सकता. सो आई हाईली एंकरेज कि आप गूगल पे सर्च मारना अंकित कौन गर्ग अंकित कौन करके ट्विटर पे 920 और मे बी आई जस्ट पुट इट ऑन द ट्वीट आफ्टर दिस. या. और दूसरा रियल लाइफ एग्जांपल मैं बोलूं. हम लोग ने हमारी सिस्टम बंद की है लेकिन इट्स जस्ट दैट हम लोग को उससे बेटर सिस्टम मिली है. यार वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द रिटर्न्स दैट इज जनरेटेड इन द बैक टेस्ट एंड द रियल लाइफ. तो हम लोग ने कभी भी या. अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिस्टम बंद नहीं की जो 2 टाइम्स हिस्टोरिकल ड्रॉडाउन आ गया हो. और वी ऑलवेज कीप ऑन हाँ. फाइंडिंग न्यू न्यू सिस्टम. तो पुरानी वाली को फेज या. आउट करके न्यू वाली डालते हैं हम लोग. अच्छा. ओके सर. थैंक यू सर. थैंक यू हेमंत. Okay, thanks, Hemant. I think we have Manish now. Manish, please go ahead. हाय. हाय मनीष. विशाल क्या हाल है? बस बढ़िया. मी एंड मनीष आर गुड फ्रेंड्स. आई एम वेटिंग फॉर द बाउंसर टू कम. मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ सर कि हाउ फ्रीक्वेंटली यू चेंज योर स्ट्रेटजीज और योर ओवरऑल जो आपका सेटअप है और किसी ट्रेडर को कब वो मतलब उस पे जाना चाहिए कि इसको अब चेंज करना चाहिए, उसका रिटर्न कम हो जाए, ड्रॉडाउन बड़ा हो जाए
मतलब आप क्या सोच के नया सेटअप प्लान करते हो कि ये अब नहीं चल रहा, अब दूसरे पे मेरे को जाना चाहिए? अगेन मनीष, सेम आंसर के क्या, वी यूजुअली बुकिश आंसर है कि भाई 2 टाइम्स हिस्टोरिकल ड्रॉडाउन, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग हमेशा फिगर आउट करते हैं कि करंट मार्केट रिजीम क्या है. ओके, इफ यू सी इन दी करंट लो विक्स एनवायरमेंट, वी आर गेटिंग whipsawed इन बोथ द एंड. अगर आप इंट्राडे खेल रहे हो और आप एक साइंटिफिक अप्रोच ले सकते हो, लेकिन हम लोग नहीं ले पा रहे. हम लोग हमेशा मोर होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 920 वाले जो स्ट्रगल थे पूरी दुनिया चला रही, और हम लोग देख रहे हैं उसके कॉल भी उड़ रहे हैं, उसके पुट भी उड़ रहे हैं. और रीजन क्या है कि विक्स बहुत कम है. विक्स कम है तो प्रीमियम कम है, तो प्रीमियम मार्केट को थोड़ी मूवमेंट करनी है आपके दोनों स्टॉप लॉस उड़ाने के लिए. तो उसके लिए हम लोग धीरे 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 पोजिशनल सिस्टम्स बढ़ा रहे हैं. और फिर हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में जैसे जैसे एक्सपायरी बढ़ रही है, पहले क्या होता था 920 या टाइम बेस्ड स्ट्रेडल क्या होते थे, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज होती थी. अभी मार्केट बहुत ही मीन रिवर्जन करता है. मतलब फ्राइडे का एग्जांपल ले लो, नीचे गया, आपके पुट उड़ गए, फिर ऊपर गया, फिर कॉल उड़ गए, वापस नीचे आया, पुट उड़ गए. तो आपको एक डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. तो इट इज एन एवर इवॉल्विंग प्रोसेस कि आप मार्केट में अभी क्या चल रहा है. और मैं तेरा जो क्वेश्चन था कि व्हेन डू यू चेंज द सिस्टम, वी एक्चुअली लेट आवर सिस्टम रन फॉर एटलीस्ट 6 months minimum. Okay, it may go up to 9 months and 12 months. One system that we discarded after running after 1 year we discarded. पर उसका काम था कि जब भी बाकी की सिस्टम ड्रॉडाउन में चलती है ना, तो ये सिस्टम को आके खाली हमको बचाना था. ऑल तो इसका रिटर्न्स बहुत ही नेग्लिजिबल था, लेकिन इट वॉज लाइक अ राहुल द्रविड़ फॉर अस. सचिन तेंदुलकर और सहवाग जल्दी आउट हो जाते थे तो पता था कि भाई आज रन नहीं बनने वाला है, सब विकेट धड़ाधड़ गिरने वाली है. तो उसकी जगह पे अगर राहुल द्रविड़ अगर विकेट पे खड़ा है तो वी आर कॉन्फिडेंट. सिमिलरली कुछ स्ट्रेटेजी के रिटर्न सब बहुत कम थे, पर दे वर कंप्लीटली नेगेटिवली और वेरी लोली कोरिलेटेड विथ आर सचिन तेंदुलकर एंड सहवाग स्ट्रेटेजीज. तो उसका काम था खाली मार्केट के ये जो स्ट्रेटेजी फेल हो जाए तो उसके सामने खड़ा रहना. तो भी हम लोग ने उसको काफी 1 साल तक चलाया, और देन वी फाउंड अ बेटर स्ट्रेटेजी विच वॉज प्लेइंग लाइक अ राहुल द्रविड़, देन वी रिप्लेस इट. So it's, I mean, I'll just add on to this question. Right? So Vishal, एज अ डाइवर्सिफिकेशन हमने वो स्ट्रैटेजी डाली तो हुई है, बट उसका इंडिविजुअल ड्रॉ डाउन देख के प्रॉब्ली वी आर मूविंग इट आउट. इज दैट राइट? Or replacing it उसका because we have found a new better बस, strategy that complements it? Or yes, we found a better strategy that complemented the other strategies. okay, तो okay, तब तक हम लोग ने वो उसको रखा था. उसका ड्रॉडाउन ज्यादा नहीं था, उसका रिटर्न भी ज्यादा नहीं था, लेकिन उसका कोरिलेशन विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम्स वर वेरी लो. सो दैट्स व्हाई, क्योंकि जब भी क्या होता है, ड्रॉडाउन प्लेज अ वेरी हेवोक इन योर माइंड. ओके, कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वो मदर ने जब भी वो लाल 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 दिखाया ना, अगर 5 दिन आप कंसेक्यूटिव लॉस करते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस हिलने लगता है. लेकिन अगर आपने 5 दिन में से 3 दिन पैसे तोड़े, लेकिन 2 दिन थोड़ा कम तोड़ा है या फिर थोड़ा मार्जिनली पैसा बनाया ना, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस टू कम बैक इनटू द सिस्टम अगेन नेक्स्ट डे. So that was the rule for it. okay, thanks Vishal. Yeah. Vishal, और I have जैसे आपकी सॉरी, जैसे आपकी टीम में, अगर आई थिंक सो दैट इज एन एक्सपेरिमेंट डन बाय एवरी वन ऑफ अस, राइट? ये जब भी आपने अपने बेस्ट प्लेयर लिए, जैसे कि अगर आपने सचिन तेंदुलकर ले लिया, ब्रायन लारा ले लिया, सब वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन ले लिए, यूजुअली दैट विल टीम विल लूज. Okay, yeah. because everybody is like a leader, or everybody is trying to play like Virendra Sehwag or something like that, right? So the point I'm trying to make is you have to have a balance of systems, which उनके हर एक के अपने अपने एक रोल है, and for that role they are the best. They are like Sachin Tendulkar for that role. Yeah. So विशाल, I have a question. जो मैं देख रहा था कि see, options by inherent they have a stop loss, right? If you, let's say, आप buy कर रहे हो, sell में तो of course there has to be a stop loss, but see most of the people lose money क्योंकि उनको लगता है option तो zero ही होना है, correct? तो या तो वो zero या hero के चक्कर में खेलते हैं. लेकिन in case आप जब sell कर रहे हो, तो when do you book profit? जब वो zero जाए, या आप बोल रहे हो 50% पे book कर दो, या मतलब वहां पे भी आप कोई लिमिट लगा रहे हो, या यू प्ले टिल द एंड? So that was a good question. So not every day, but on Thursday we used to observe कि we used to make a lot of money and lose it all back. Okay, जैसे ही Yeah. गामा स्पाइक आ जाता था. So we do not take random decision. We actually try to go in the code. We try to get into the data and figure it out.
So what we really try to figure it out, I'll tell you, is जब भी Thursday चल रहा है या expiry चल रही है, and when your 90% of your option premium gets decayed by 2 o'clock or maybe 1 o'clock, um, the idea was to book it out. And it's not me, my hunch feeling. It's actually data that was telling us. Yeah. Okay? क्योंकि मेरा पहला मानना था कि अगर ये 10% भी अगर 52 वीक एक्सपायरी है, okay, you're actually leaving around 520 whatever the percentage return that is left, right? क्योंकि आप सोच Yeah. रहे हो ये 10% के लिए क्यों इतना बड़ा रिस्क लेना है, लेकिन मे बी यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट मे बी दैट वाज दी एज। वो जो लास्ट के 10% जो तो कभी भी आपका इन द मनी नहीं होता था ना, हाँ. वो आपकी एज थी शायद। पर वी Mm. हैड टू बैक टेस्ट दैट नंबर टू डिसाइड कि वेदर इट रियली मेक्स सेंस और नॉट, and Mm. eventually we figured out there is an edge of booking it out at 90%. So although Okay. we are working on a lot of profit booking strategies, but as of now 90% on an expiry day before 1 to 2 p.m. Okay. Yeah. तो मतलब इन वन ऑफ माय सिस्टम्स, राइट, तो उसमें एक टाइम फैक्टर रहता है, और हम्म, वो टाइम फैक्टर देख के मतलब उसका कितना डीके हुआ है और कितना टाइम रहता है, तो राइट। वो, तो अगर वो रेशो डिफाइंड है, अगर वो उस रेशो पे पहुंचा है बुक आउट, सो समटाइम्स आई बुकड आउट 50% ऑल्सो, राइट, कि वाह, बहुत टाइम रहता है और वो रह गया, और समटाइम्स लाइक इट हैज बीन 80, बट या आई एम गुड टू नो, या so I got this question from somewhere, but it was excellent question, so I thought I'll ask. no, this is a brilliant question. And probably people actually gradually cut down their positions as well, right? With the reducing time when the how much time is left, right? सी, हाँ, और Right, प्रॉब्लम ये होता है ना, वो आखिरी 10% कमाने के लिए आप बहुत गवा देते हो, राइट, और आपका माइंड स्पेस भी बहुत खराब होता है उस चीज में, तो very true. Correct. Okay, I'll open up the speaker request for Chetan now. Chetan, please go ahead. Okay, I think Chetan is gone. I'll probably. Okay, Chetan is back. Yeah, hi Chetan, all good Chetan. Hi, sir. I have a very great respect for you. Sir, just one small thing. I mean, before few minutes, you were talking that in trading, the most important thing is having a emotional intelligence, which is like a very perfect answer from you, sir. How to develop that emotional intelligence? I mean, like, what are the activities you think we should do on a daily basis to improve our emotional intelligence? Dustin, you want to answer this one? I will also answer. या सो बेसिकली चेतन, वेरी गुड क्वेश्चन। सी, आप किस तरह से किसी चीज पर रिएक्ट करते हो ना, दैट इज योर इमोशनल क्वेश्चन, राइट, और ऐसा नहीं है कि आप इमोशनली कैसे हो, वो उस चीज पे डिपेंड करता है। आई थिंक एज विशाल सेड, वो प्रॉब्ली जब क्रिकेट खेल रहा होगा वो बहुत एग्रेसिव होगा, या लाइक इफ ही इज डूइंग समथिंग एल्स, ही मे बी अ टोटली डिफरेंट पर्सन। So when money comes in front of you, how do you react to it? That is something which is known as emotional quotient. आपने बहुत बार देखा होगा, आप जो कुछ साइट्स होती हैं which give you artificial money, आप उससे ट्रेडिंग करते हो, आप भयंकर पैसा बनाते हो, राइट, और जैसे ही आपने रियल मार्केट में आए, आपने नहीं कमाया, तो व्हाट चेंजेस? योर इमोशनल क्वेश्चन चेंजेस। नाउ आप उसको कैसे डेवलप कर सकते हो? आई थिंक दिस इज ओनली बाय रीडिंग बुक्स, बाय लिसनिंग टू पीपल लाइक विशाल। अगर आप ये जो ट्विटर स्पेस हम कर रहे हैं, नहीं सीरियसली, राइट, आई मीन, और विशाल ने मेंशन भी किया था शुरू में कि मोस्ट ऑफ हिज इज लर्निंग इज बाय मीटिंग पीपल। तो आप जितना अलग अलग लोगों से मिलोगे, उनके एक्सपीरियंसेस को समझोगे, दैट्स वेयर योर इमोशनल क्वेश्चन विल इंप्रूव। मेरे आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट पॉइंट। आई थिंक यू मेंशन कि जितने लोगों को मिलोगे आप सीखोगे, उनके ड्रॉडाउन से सीखो। दूसरा मैं आपको बताता हूँ दैट रियली हेल्प मी वाज रीडिंग अगेन। आई डोंट नो व्हाई आई कीप ऑन डूइंग इट, बट आई थिंक सो इट इज द फैक्ट। मार्केट विजार्ड बाय जैक श्वेगर, बिकॉज व्हेन यू रीड थ्रू दिस बुक्स यू गो थ्रू दी जर्नी। दो लेवल से आप सीख सकते हो। वो ट्रेडर भी जो $1 बिलियन बना रहे हैं आज की तारीख में, दे हैव आल्सो गॉन थ्रू लॉट ऑफ बैड फेजेस, ओके, एंड व्हेन यू गो थ्रू लिसन टू देम यू विल लर्न लॉट ऑफ न्यू थिंग्स कि भाई इसने अपने ड्रॉडाउन को कैसे हैंडल किया, क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ये भी है कि हाउ डू यू हैंडल ड्रॉडाउन। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली जो लास्ट बुक है अननोन मार्केट विजार्ड में, तो जैक श्वेगर एक बंदे को पूछ रहा है कि हाउ डू यू हैंडल ड्रॉडाउन, एंड ही सेज कि आई डबल अप माय वर्क। मतलब मैं जो भी करता हूँ मैं उसकी इंटेंसिटी फ्यूरियसली बढ़ा देता हूँ कि बॉस मेरी ये मिस्टेक क्यों हुई। मैं आई गो टू माय ट्रेडिंग जर्नल, आई गो टू माय ट्रेडिंग लॉग्स एंड ट्राई टू फिगर आउट
कि बॉस मेरी गलती क्या हुई और मैं क्या कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ. एंड इंटरेस्टिंगली ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू हिज मेंटर, द गाय हु वाज टोल्ड कि भाई मैं अपनी लर्निंग स्पीड डबल कर दूंगा. और उसने अपने उसके मेंटर को पूछा कि भाई हाउ डू यू हैंडल योर ड्रॉडाउन. एंड ही सेज आई गो एंड डू पार्टी. ओके, आई गो टू पार्टी व्हेन आई एम इन अ ड्रॉडाउन. एंड Yeah. इट वाज लाइक जस्ट अमेजिंग, क्योंकि उसने एक बहुत सही आंसर बोला कि बॉस ड्रॉडाउन इज पार्ट ऑफ माय सिस्टम्स. The way I'm going to handle my drawdown will decide कि what kind of a trader will I be. क्योंकि drawdown में आपको बहुत ही itching होगी to change the system. लेकिन अगर system आप थोड़ी देर चलने दोगे तो eventually it will come up. I just recently saw someone posted out time-based traders are making new highs. But I'm telling you, in last 6 months, time-based traders has stopped working or stopped or Yeah. very little or negative money. But 6 महीने में 90% of the traders निकल गए. जो टिके रहे उनको ये महीने में रिकवरी मिल गई उसकी. So it is Yeah. all about how you go through that drawdown. It's the second phase where I manage my emotional conscience. और मैं हमेशा बोलता हूँ go through at least 2 drawdowns, price wise and time wise both. बहुत लोगों को लगता है drawdown खाली प्राइस का होता है. Trust me, price drawdown is nothing compared to time drawdown. टाइम ड्रॉडाउन मतलब आपने एक इक्विटी हाई जैन में बनाया, अगर आपने 3% ही तोड़ा है समझ लो, और 6 महीने के बाद आपने इक्विटी हाई बनाया रहेगा ना, that time drawdown will suck the life out of you. Yeah. Yeah. And चेतन, जस्ट टू ऐड टू इट, एक और थॉट मेरे दिमाग में आया था. तो ऑटोमेट करना ना इमोशनल क्वेश्चन को काफी हद तक हटा देता है. तो अगर आप ये सोच रहे हो आप बैठ के डेस्क ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका इमोशनल क्वेश्चन आपको बहुत हाई चाहिएगा. तो मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट मेनी डिफरेंट थिंग्स. तो इमोशनल क्वेश्चन इन योर बाय योर सिस्टम एंड व्हाइल यू आर ट्रेडिंग एज वेल, राइट. तो आप अगर सोचोगे कि मैं बैठ के ट्रेडिंग कर रहा हूं तो यू आर इमोशनली हमेशा सातवें आसमान पे रहोगे आप. तो उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है. तो आई जस्ट वांट टू सेपरेट द टू. व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि आपका सिस्टम है जो आपने उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है और उसको कैसे हैंडल करना है, rather than you sitting and doing everything by yourself. I think very true. I think thanks for these answers, right, Destin and Vishal. Thank you so much for the answer, sir. Hello. Thank you so much, Vishal, sir. Right, so I'll probably approve the speaker request for Vishara now. Yeah, Vishara, you are the speaker now. Vishara. Yeah, hi. Yeah, Vishal sir, talking to you again, and thanks a lot for the ultimate guidance you have provided. The question is basically, Thank you. the question is basically related to expiries only, and this time I'm talking about Sensex expiry. So what I have lately observed is that the Sensex is pretty much volatile, and from like we see exactly 100% jump. So from 46, the premium goes up to 92, and then it ends up in zero, right? So in such systems or in such instruments, what is the uh, stop loss you keep? Do you keep it as 100%, 80%, 70%, like in your system? Because I'm basically a discretionary trader, like trading on the desk basically, and कभी कभी वो manage करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. I agree. So I have to tell you the honest answer that I don't trade Sensex option yet, because सबसे पहले important चीज होती है liquidity. कि अभी मनु की तरह अंदर तो लेकिन बाहर निकलना पहले सोचना है हम लोग को. And currently the size, I'm not bragging, but the size that we trade, we prefer to have very liquid options market. और Sensex में again I know कि expiry day पे liquidity has start picking up, but it's still not to our comfort zone. क्योंकि किसी दिन हम लोग अटक गए तो निकलना मुझे नहीं पता, लेकिन I can tell you from my experience कि जैसे बैंक निफ्टी थी, ठीक है, it's like जितना I don't know what is the correlation, I'm not an option expert, but what I've really start seeing कि जितनी वैल्यू ज्यादा होती है ना अंडरलाइन की, ओके, उतनी वॉलेटिलिटी मूवमेंट एशियन पेंट्स ले लो, ऑल्दो इट इज अ वेरी स्टेबल स्टॉक, बट उसकी मूवमेंट अगर आप परसेंटेज में देखोगे तो बहुत कम रहेगी, लेकिन इंट्राडे मूवमेंट बहुत फास्ट करता है, बिकॉज बायर सेलर्स की डेप्थ हमेशा वो सोचते हैं ना रिटेल कि यार इतना बड़ा स्टॉक है तो कैसे ट्रेड करूंगा. तो सेंसेक्स में भी मुझे वही लग रहा है, बट हैविंग सेड दैट इट विल हैव अ लॉट ऑफ trending characteristic. Always remember this. Bank Nifty, okay? Bank Nifty has a lot of trending characteristic and Nifty has a lot of mean reversion characteristic. What do I mean by that? कि बैंक निफ्टी में 13 स्टॉक है,
13 या 15, नाउ तो आई फॉरगॉट व्हाट इज द फाइनल नंबर, बट जो कम स्टॉक्स है और वो भी सब बैंकिंग स्टॉक है, तो अगर कोई बैंकिंग अनाउंसमेंट आएगा तो वो ट्रेंड करते रहेगा। राइट जब भी निफ्टी के अंदर, निफ्टी इज मोर ऑफ मीन डिवर्जन, क्योंकि उसमें 50 स्टॉक है, तो एक सेक्टर में कुछ आग लगी तो दूसरा उसको मैनेज करने आ जाता है। राइट तो नेचुरली ऑल द कोरिलेशन बिटवीन देम इज वेरी हाई, आई नो दैट, बट जो स्पर्ट्स होते हैं ना वो कम होते हैं निफ्टी में। आई फील बैंक निफ्ट सेंसेक्स में इस एकदम स्वीटली इस प्लेस बिटवीन द टू। वो निफ्टी की तरह 50 स्टॉक का डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, लेकिन 30 स्टॉक है। और बैंक निफ्टी की तरह एकदम कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो नहीं है, तो इट लाइज इन बिटवीन। तो देर विल बी डेज वेर इट विल ट्रेंड एंड देर विल बी डेज इट विल मीन इवेंट, बट मोटा मोटी आई फील ट्रेंड फॉलोइंग, जो आप कम वाले स्टॉप लॉस रखोगे ना, 25%, 30%, and play for a trend following rather than the mean diversion, it will play out well. Oh. But in the current expiry scenario, we know everybody is doing a 920 और टाइम बेस्ड straddles और जो भी, तो दोनों जगह मारने की तैयारी भी रख रही है, लेकिन आपका मोटा पैसा बनेगा आपका ट्रेंड बेस पे। Yeah. So maybe I'll add, Vishal. So just last Friday, I tried Sensex for the first time. Plus, just last Friday. और मैं बस एक्सपेरिमेंट करने के लिए घुसा था उसमें। तो एक तो स्ट्रैडल जैसे आपने बोला, बट आई वेंट विद, सी प्रीमियम्स इतने लो थे, और इफ यू गो विद सम स्प्रेड्स तो अमेजिंग रिटर्न आता है, क्योंकि प्रीमियम स्लो होते हैं और दूर के प्रीमियम्स, तो स्प्रेड वाला अमेजिंग रिस्क रिवॉर्ड देता है, स्पेशली बिकॉज वॉलिटिलिटी इतनी हाई है, स्पेशली बिकॉज वॉलिटिलिटी इतनी हाई है। डायरेक्शनल और आपके हिसाब से सॉरी, डायरेक्शनल है ना? हाँ वो तो सी स्प्रेड हो गया ना। हाँ। तो बेसिकली इट्स नॉट अगेंस्ट टाइम, इट्स अ ट्रेंड मूवमेंट। तो चाहे वो आपका लॉस वर्सेस जो प्रॉफिट का वो रहता है ना, दैट बिकम्स वेरी ल्यूक्रेटिव। लेकिन अगेन इट इज जस्ट वन फ्राइडे, सो आई हैव बीन स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग। लेकिन अगर बहुत बड़ा स्टॉक 66 कितना चल रहा है अभी मुझे ध्यान नहीं है, 60 समथिंग थाउजेंड है, राइट? तो उतना बड़े पे आपके जो प्रीमियम्स हैं वो मतलब इन द मनी वाले ही, मतलब 50-60 पे ट्रेड कर रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट लास्ट फ्राइडे। तो कितना ल्यूक्रेटिव रहता है, राइट? आई मीन 20 रुपए पे आप 100 रुपए कमा सकते हो। तो मेरे हिसाब से इट्स स्टिल अर्ली डेज, नया नया है, इतने ज्यादा लोग घुसे नहीं है, तो वॉलिटिलिटी जरूर ही हाई रहेगी। और आपको बड़ा खेलने के लिए वॉल्यूम चाहिए। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू हैव वॉल्यूम। Thank you. Right, plus, I think you have to take care of the technical glitches as well. So I also started doing Sensex, but with limited quantities, and I think I got trapped in that adapter thing, right? That happened with the Initial 2 I mean, weeks में हुआ था, right. But right. So I got trapped in that, but I think the quantity was low, so I came out unscattered there. Yeah. okay, thank you so much. Okay, thanks. So Vishal, I think it's already been 1.5 hours. So Yes. how comfortable you are, and probably we have 3 requests, and is it okay if we take the last 3 requests? Yeah, because I was about to tell you my battery is running at 9%, so maybe I'll be able to complete the last 3 questions. Sure, last 3 requests, and one of them is Manish again. So probably I'll take the last one from. I mean, last would be Manish. So Mayur, I've given you the speaker request. Yeah. So you are the speaker now. Go ahead, please. Okay, Mayur, you have the speaker rights now. Mayur, I think so. You're on mute. Yeah, he's on mute. I think so. He's on mute. Yeah, I think let's move on, honestly. Let's move Right, on. perfect. Yeah. So I'll probably remove Mayur from the speaker, right? And then I think Puneet is okay. Puneet, go ahead, please. Puneet, please ask your question. You are on mute, Puneet. I'm not sure. I just talked about the technical विशाल, मेरे पास एक क्वेश्चन है। सो हमारी टीम में ना एक गर्ल भी है, ठीक है, इन वेल कंपाउंडर्स। तो वो मेरे से हमेशा पूछती रहती है, एम आई इन द मेंस वर्ल्ड? So I will give you an honest answer. We have a team of 15 people. We have about 9 women and 6 men. Wow. Okay. Yeah, this will please us.
And if you ask me honestly, women are far more better risk manager than anyone that you can think of. Because trading is all about multitasking. And Yeah. I think so the best multitasker is women. And Well said. the Yeah. trust and the trust factor is at a different level. Okay, because I'm nothing against anyone else, but we have seen in personal life as well. For boys or the young guys, 10,000 rupees is also motivation to jump to a Yeah. new, circuit. But for women, it is more of respect, money, and everything, learning. So we have always tilted towards women, and in fact, my wife is Yeah. with me in my trading. My daughter's friend's mom is into the trading, and they didn't knew anything about market. Just imagine that, and they are Yeah. managing 150. Like, sorry, for they're managing a big amount. Right. Wow, Vishal. No, very well said, Vishal. Yeah, thank you. Yeah, hope Yeah, many women traders will come up now. yep. Sure. So last two requests, right? I'll approve Manish's request, and then probably I'll take Arjun. So and then probably we'll shut off the space. Okay, Manish, please go ahead again. I think it's in the listener mode. Okay. I think it's still Yeah. Yeah. okay. He's in the speakers mode now. Manish, can you hear us? I'm not sure. I mean, why do these guys? I mean, everyone is turning up as I mean on mute when I request. I mean, turn their request on. नहीं, ऑनेस्ट ट्रेडर वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। तो आप जैसे Hmm. क्योंकि बाकी तो लिसनर मोड में है ना, तो जैसे ही उनको बनाते हो बाय डिफॉल्ट तो म्यूट पे ही आते हैं, तो दे हैव टू अनम्यूट देमसेल्फ। Okay. So Manish, in case you are listening, right, you have to unmute yourself. विशाल Yeah. सर, आप साइमल्टेनियसली कितनी स्ट्रैटेजीज रन करते हो और पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करते हो उसमें? मतलब आप एक पोर्टफोलियो में एक ही स्ट्रैटेजी रन करते हो कि मल्टीपल स्ट्रैटेजी रन करते हो? So when we started out, we just had two strategies in our bouquet. Currently, we run about 15 strategies, different strategies. And जैसे मैंने बोला ना कि your experience with the market will grow, and you will also go through many phases, and you'll keep on adding new strategies. So in a single portfolio, gone are those days when we were trading only one or two strategies. Now we only trade bouquet of strategies where we have about 15 odd strategy, और जो रेशियो भी हम लोग मेंटेन करते हैं वो पेरेटो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं. Pareto is 80-20, right? So 80% of our work gets done into intraday and 20% gets overnight. And as Pareto principle says, your 80% of your return will come from your that 20% of effort. And same is the case for us. Our 20% overnight strategies do far more better than our intraday 80% strategies. But yeah, both of them had their advantages and disadvantages. So हम लोग ऐसे ही manage करते हैं. So we have Tanmay also on the. I think so. Next question should be asked to Tanmay because he's the brain behind whatever we do. Perfect. I don't see Tanmay. Let me give him the speaker rights as well. One moment. So he ran away. Looks like. Oh, he's not. You Okay. put him on the spot. Yeah, I don't now. Okay, I think last question. I think Arjun. So I'll just give him the speaker rights. Okay, Arjun, please go ahead. Yeah, hi Rajan. हाय हाय मेरा मुझे आईआरसीटीसी का व्यू पता करना है कि अब मैं उसमें एंट्री लेना चाहिए भी है अभी अवॉइड करना चाहिए, और सेकंड विप्रो। आप बहुत गलत इंसान को पूछ रहे हो अर्जुन जी, बिकॉज मुझे खुद को नहीं पता कि आईआरसीटीसी का भाव क्या चल रहा है और विप्रो का भाव क्या चल रहा है. एंड ऑनेस्टली आई एम मोर ऑफ अ सिस्टमेटिक ट्रेडर. तो हाँ, मैं व्यू बेस करता हूँ लेकिन अपने लिए करता हूँ. सो आई ऑनेस्टली आई डोंट हैव अ व्यू ऑन आईआरसीटीसी एंड विप्रो. ओके, सॉरी. नो प्रॉब्लम, थैंक यू। थैंक यू Okay, I think अर्जुन. right. This was a quick one. So probably we have just one last request. No one else has requested. Sure. So I'll just approve one for Curious Trader. Yeah. One moment. Oh my god. Okay, I think Hi. Good. right. Okay, Curious Trader, please go ahead. Yeah. Yeah. So I just wanted to. This is not a question actually. I just wanted to share my experience trading Sensex contracts in the last 3-4 weeks. So one thing is, some brokers not providing market orders is a problem.
You need to find, Mhm. especially if you want to execute, simultaneously, let's say a strangle, you want to create a strangle position, or you want to roll up or roll down your calls and puts, then having, some kind of an algorithmic way of executing helps. So, Mhm. the way I have done the market execution, let's say, let's say I want to sell, I take the current price and place a limit order 5% lower, right? And then Yeah. likewise for reverse for buy. So something like that. Second problem is some of the charting tools, like iCharts. I don't actually, my subscription has stopped, but I don't think they still provide Sensex, spread charts or um, other charts, right? So having maybe something of your own with which you can generate those charts, spread charts, triangle charts, straddle charts, right? That really helps. So these are two things which kind of help. I mean, I do very small volumes, maybe 4,500, 5,000 is the max I have gone quantity wise. But with that kind of a quantity, it seemed like a okay thing. I didn't face any execution issues as such. So I think overall liquidity has gone up, and I was lucky the day the problem happened with one of the discount brokers. I didn't, I was on the other side where actually it ended up, making P&L for me, profit for me. So yeah, those are some of the thoughts I just wanted to share with the group. No, I think that's brilliant. Thanks. And market order is a big problem, what you rightly mentioned. And if we not executed properly, we can be in a soup. So thanks a lot. Yeah. Cool. All right, then I think we don't have any more requests. So, any closing comments, Vishal, Destin, you guys have for all the trading community, right? Probably on, I mean, people who would listen to the recording as well. So yeah, I have one comment, and I think so that is like we have engraved into our books and everything, and we keep on always saying that it's borrowed from Mr. Warren Buffett, but change it for the trading purpose. So we say its markets are nothing but a systematic transfer of money from an undisciplined trader to a disciplined trader, nothing more than that, and it's the fact. Perfect. I think you have summarized it very well, Vishal. Yeah, Yeah, very the well said. market Yeah. problem, right? Yeah. Destin, anything you want to add? नहीं, I'll just say मजा आ गया विशाल, और I hope we'll have more of this kind. People really learn from experiences of each other. I really feel that. और अपनी भाई जो दूसरे लोग गलतियां कर रहे हैं तुम ना करो ना, तो that's where we'll find out mistake with people other do. Make new ones. और प्लस अपनी गलती बता के अपना मन हल्का भी कर लो. The other way around as well. पर No, विशाल but I said a very really good want thing. to. Mhm. Yeah, I go want ahead. to really thank you, Delsin and Honest, for giving me this opportunity because I'm always ready to, share whatever that I've learned because in my days there was not much of a platform to share. But Yeah. since we have now these platforms, we are able to share so much freely. So I think so. Thanks really, means a lot for giving me this opportunity. या एंड टू एवरीवन, जब विशाल बोल रहे थे ना कि देख आपका कुछ चलता नहीं है तो आप ब्लेम करते हो कि वो सामने वाला बंदा ठीक नहीं है, तो आजकल बहुत लोग घुस भी गए हैं इन सब चीजों में, राइट, विच आर ट्विटर पे तो भरमार है. तो आई विल से कि मतलब यू हैव टू पिक एंड चूज. आपका स्टाइल, आपका जो चीज सही लगती है ना, यू फॉलो दैट पर्सन rather than भीड़ के साथ चलने का कोई मतलब नहीं है कभी. आप यू हैव टू डिस्टिंग्विश योरसेल्फ. तो चूज वाइजली. या Yeah, I think और add on to कई this. बार तो मतलब आई रियली गेट डिसहार्टेंड बाय सीइंग सम ऑफ द ट्वीट्स बाय लाइक ट्विटर पे होते हैं ना, मतलब कैसे लोगों को क्या बना रहे होते हैं उनको समझ में नहीं आता. See, that is the point, right? मतलब मैं अगेन रिपीट करता हूँ. ओके, इट्स ऑलवेज इजी टू प्ले विक्टिम कार्ड कि भाई या मेरे को उसने उल्लू बनाया, लेकिन यू आर द वन हु ऑल्सो वेंट देयर फॉर योर ग्रीड. कि आपने देखा कि भाई इतना पैसा बना रहा है, मैं भी बनाऊंगा. तो मतलब ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, उसको दोनों लगाना पड़ता है. और मतलब आई जस्ट वांट टू टेक एवरीवन रिस्पॉन्सिबल, लाइक it's just not that one person, it's you also and we also, me also for that matter. When I got influenced by Madan's 3 lakh to 30 lakh, it was me who was thinking कि हाँ भाई क्या करना है, ऐसा कैसे हो सकता है. So it is always two hands. So stop blaming, and I think everyone else and not you. And then that is the time that you will learn कि बस market is not there to take a revenge on me.
I'm my own enemy, and I have to just work on myself to be better at it. Yeah. Guys, my 1% battery now. Okay. Take care, Vishal, and have a Awesome, good day. guys. Thanks a Chalo. lot, Dustin. Thanks, Bye bye. Honest Trader, for giving me this opportunity. Bye bye. Thank you, Bye. everyone, for listening in. Bye. Yeah. Thanks, Vishal. Bye. तो honest trader, मतलब we can close it now, right? और guys, I mean, I seriously sometime मुझे ऐसा लगता है कि we need to follow. अब finally आप अपना पैसा उड़ा रहे हो ना, so please be very wise. And it, like we had a All right, friend, I thanks just everyone want for to repeat joining. I that. think there's some glitch at my end, but I think I'll close the Okay. the bridge right now. Yeah. All right. Thanks everyone, and so probably I'll post the recording for this as well and send it across to Vishal so he can share it as well on his timeline, probably the YouTube handle that he has. Thanks everyone. Thanks Yeah. Vishal again, and thanks Destin Musk for your time. Thanks. Bye. Thank you so much, honest trader. Thank you so much for arranging this. Bye.